में 5 बड़े चैलेंजेस हैं, एंड लेट मी जस्ट क्विकली गो 1 minute ऑन ईच चैलेंज इस टाइम, एंड इन नॉट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. पहला चैलेंज इज टू फिक्स आवर पॉलिटिक्स. नाउ ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जी फिक्स आवर पॉलिटिक्स 70 साल में नहीं हुआ तो भी कैसे हो जाएगा. बट द फैक्ट इज कि जो हमें अभी नजर आ रहा है इस वक्त, द स्टेट ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये अनसस्टेनेबल है. आप चाहे इसको सपोर्ट करते हो या उसको सपोर्ट करते हो, एज अ पाकिस्तानी, please understand, and I'm sure that you do, that this kind of polarized politics cannot sustain. ये आज 2 महीने 6 महीने साल तो निकाल लेगी, लेकिन इसका जो जख्म लग रहा है, उसकी जो पेन है वो बड़े दिन तक जाती है. तो वी नीड टू फिक्स आवर पॉलिटिक्स. अब वो कैसे होगा, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है और उसमें भी कुछ बात हो सकती है. बट नंबर 1, the current brand of politics in Pakistan is unsustainable. That needs to change. Number 2, the current state of the economy. देखिए बड़ा आसान है कहना. मैं कहूंगा जी पिछले वालों ने किया, पिछले वाले कहेंगे जी उनसे पिछले वालों ने किया. ये कहना बड़ा आसान है. But the fact is that all of you, सारे यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री के elite लोग बैठे हुए हैं, who know far more about economy than I could ever know. But एक चीज तो मेरे जैसे एमेच्योर अनट्रेन्ड बंदे को भी पता है, और वो ये है कि आज आईएमएफ, कल सर्टेनिटी थी आज आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाएगा, कल हमें उसके आज मनी बिल आ जाएगा, फिर हमें उसके $1 बिलियन मिल जाएंगे, फिर हमें चीन और यूएई और कुछ और मुल्क जो है वो हमें पैसे कुछ दे देंगे, एंड वी माइट बी एबल टू कीप आवर हेड अबव वाटर. But is that the state of being that we are looking for, just keeping our head above water? So ultimately, immediate term में तो चलें, आपने सांस लेनी है, शायद आपको मिल जाए. उसमें किसका कितना political capital bleed हुआ, कितनी inflation आएगी, वो हम सबको मालूम है. But ये जो पिछले चंद साल गुजरे हैं, I think इसमें एक चीज बिल्कुल clear हो गई कि if we need to turn around Pakistan, we need to take those very difficult economic decisions that we should have taken about a decade back. अब वो सब उन मुश्किल फैसलों की बात सारे कर रहे हैं. तो अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है इस सारे ये जो इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया, अगर कोई एक सिल्वर लाइनिंग है तो वो ये कि एटलीस्ट एवरीबडी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग ऑफ द फैक्ट दैट वी नीड टू टेक दोज डिफिकल्ट डिसीजंस. व्हाट आर दोज डिफिकल्ट डिसीजंस? अभी बात हो रही थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की. अल्टीमेटली जब तक आपने ये जो हमारा ग्रोथ, फिर डेफिसिट, फिर आईएमएफ, फिर ग्रोथ, फिर डेफिसिट, फिर आईएमएफ का जो साइकिल है, ये जो 70 साल से चल रहा है, दिस कांट गो ऑन एनीमोर. दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड दैट. वो साइकिल तभी टूट सकता है जब मुश्किल तरीन फैसले. और मेरे ख्याल में मेरी होप ये है कि अब जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, दे विल रियलाइज दैट इसके अलावा कोई चारा नहीं है. ये मैं आपको 5 साल की बातें कर रहा हूं. मेरे ज़हन में ये एक टर्म की, ये जो रिफॉर्म में बात कर रहा हूं, इफ वी नीड टू रियली टर्न आवरसेल्व्स अराउंड, ये जो 5 साल का टर्म आ रहा है अगला, ये जो मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, इकोनॉमी की, मेरे ख्याल में ये 5 ईयर का चैलेंज है. इस 5 साल में अगर हमने ये ना किया, देन वी आर इन सीरियस ट्रबल. सो वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस अबाउट पॉलिटिक्स, वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस अबाउट द इकोनॉमी, दे हैव टू बी टेकन नाउ. नंबर 3, education with an aim to the future. 60% अंडर 30 हमारी पॉपुलेशन है. तालीम का हाल आप देख रहे हैं. अगेन दिस इज नो ब्रेकिंग न्यूज, बट द फैक्ट कि आपकी एक अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन का जो इम्पैक्ट हो रहा है आपकी इकोनॉमी पे, वो अब सबको नजर. पहले में लगता था कि नहीं जी ऐसी पाकिस्तान ऐसी चलता रहा, ऐसी चलता रहेगा, बट दैट कैनॉट गो ऑन एनी मोर. Everybody talks about education. Somebody talked about कि जी मैं आऊंगा तो एजुकेशन इमरजेंसी लगाऊंगा, बट अब वो क्यों नहीं हो रहा? वो 18th अमेंडमेंट में प्रोविंसेस में चला गया है, सेंटर के पास कुछ नहीं रह गया. ऑल ऑफ दीज आर इश्यूज, बट दीज आर ऑपरेशनल इश्यूज. द लार्जर स्ट्रेटेजिक इशू इज कि अगर आपने 223 करोड़ की पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव बनाना है तो वो ऐसे नहीं बन सकता. एंड देयरफॉर इन द नेक्स्ट 5 years somebody has to take some very clear decision making in terms of के हमने अपनी वर्क फोर्स को कैसे ठीक करना है to be able to deal with the economic challenges of the future. ये हो गया जी नंबर 3. नंबर 4 चैलेंज अगले 5 साल के लिए,
आईटी, टेक्नोलॉजिकल, डिजिटल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा एक्सपोर्ट्स का है। आईटी हैज द पोटेंशियल टू हैव योर एक्सपोर्ट्स बिगर देन टेक्सटाइल्स। मैं खुद कितनी मीटिंग में बैठ चुका हूं जहां पे बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी आईटी को करना है, फैसिलिटेट करना है, बट ऑब्वियसली इट इज इजियर सेड देन डन। इट हैज टू बिकम अ नेशनल प्रायोरिटी, बिकॉज देखिए वी आर नाउ इन द डिजिटल एरिया। अभी हमें लगता है कि आप, खैर मैं आप लोगों को तो मेरे से बेहतर पता है, आईटी इज नॉट अ सेक्टर, आईटी इज नाउ वे ऑफ लाइफ, डिजिटल इज अ वे ऑफ लाइफ। और उस वे ऑफ लाइफ से अगर आपने को डील करना है तो वी रियली हैव टू इंसेंटिवाइज दिस सेक्टर। और अगले 5 साल में डिजिटल इकोनॉमी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, any government, whichever government comes next time, this has to be right at the top. और आखिरी और पांचवा, which is no surprise, is security. We thought we had controlled terrorism, but unfortunately आपने देखा पिछले 2-3-4 महीने में क्या हुआ है, and this has become a very serious problem now. Terrorism, TTP, the situation in Afghanistan, हम जो मर्जी कर लें, if the law and order situation is unstable, we can't fix the other challenges. तो वो चैलेंज जो कि हमारा ख्याल था कि हमने उबूर कर लिया है, वो वापस आ गया। Now a lot has to be done, but this is a completely different topic. So terrorism, law and order is the final target. ये 5 challenges है जी मेरे ख्याल में for the next 5 years. इसके ऊपर जो मेरा आखिरी नुक्ता है, and then I'm going to wrap up, इसके अगर आपने ये 5 चैलेंजेस उबूर कर भी लिए तो बाय द टाइम 5 साल का मतलब है 2028. So let's assume there is a fresh mandate government here in Pakistan this year, which will go on till 2028. Let's be positive and think कि अगली हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करेगी. Let's assume that. So 23 से 28 तक आपको एक टाइम मिला जिसमें आपके पास 5 साल हैं. 5 साल में उस गवर्नमेंट ने ये वो चैलेंजेस हैं जिन पे उबूर हासिल करना है, नोइंग कि उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर आपने कर भी लिए, व्हाट विल द वर्ल्ड लुक लाइक इन 2030? ये हमारी नेशनल डिस्कोर्स में सब तो बात हो रही है. हम अपनी अदलिया की बात भी करते हैं, हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट की बात भी करते हैं, अपने इलेक्शन की बात भी करते हैं, हम अपने मीडिया की बात भी करते हैं. आज मैंने आपसे वो बात नहीं की कि मीडिया में क्या मसाइल हैं, वो एक पूरी अलग दुख भरी कहानी है. हम उन सब की बात तो करते हैं, लेकिन हम नेशनली, चाहे हमारा टेलीविजन हो, चाहे हमारी सेमिनार्स हो, हम ये बात कम करते हैं कि सन 2030 में दुनिया कैसी होगी और सन 2030 में पाकिस्तान कैसा होगा. सन 2030 is only 7 years from today. But if you just sit down for 20 minutes on your Google and just look at world in 2030, you will not recognize where we are going. And then when you contrast these 5 challenges जो मैंने आपके सामने रखे हैं with what will be the challenges of the world in 2030, तो आपको वो जो sharp contrast नजर आता है, that is what the real challenge is. कि हम अभी इस वक्त आज के फौरी चैलेंजेस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो चैलेंज जो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी डोमिनेटिंग. आप में से आई एम श्योर चैट जीपीटी बहुत सारे लोग यूज कर चुके हैं. अगर नहीं कर रहे तो मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली इंकरेज करूंगा, गो चेक इट आउट. ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है ऑफ वेयर एआई इज गोइंग. इन 7 years AI will change the world beyond what we can recognize. आपके कौन से ट्रेडिशनल सेक्टर्स पाकिस्तान में इंपैक्ट होने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस? बैंकिंग, मेजर डिसरप्शन आ रही है बैंकिंग में. लॉजिस्टिक्स, आई एम श्योर यहाँ पे आपके बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं. लॉजिस्टिक्स में मेजर डिसरप्शन आ रही है. ट्रांसपोर्टेशन की पूरी इंडस्ट्री जो है वो डिसरप्ट होने जा रही है. साइबर सिक्योरिटी is going to be a major challenge. And finally, last but not least, ये लिस्ट तो बड़ी लंबी है, हेल्थ केयर. ये जो डिसरप्शंस आ रही हैं हमारे जैसे मुल्क में, इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये आपकी वर्कफोर्स को डिस्टर्ब करेंगी. ऑटोमेशन विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट.
क्योंकि जो कंपनीज बैठी हैं, जो जब वो एआई को एम्प्लॉय कर रही हैं और उनकी कॉस्ट कम हो रही है, तो वो फिर उस, और एआई जो है वो जब पहले कहते थे ब्लू कॉलर वर्कर्स को रिप्लेस करेगा, अब वो व्हाइट कॉलर वर्कर्स को रिप्लेस कर रहा है। अगर आप मैं बड़ा अरसा मैंने मीडिया में गुजारा है और मुझे मेरा लिखने से भी ताल्लुक है, मैं लिखता भी काफ़ी हूँ। आज अब चैट जीपीटी को कहें कि मुझे कॉलम लिख के दो, वो मेरे से बेहतर कॉलम लिख के दे देगा। सो राइटिंग, मीडिया, न्यूज़ रिपोर्ट्स, वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। यहाँ पे मुझे कुछ ऑडियंस में कुछ आर्किटेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, मैं उनकी भी गोशगुजार कर दूं कि आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपके दीगर डिज़ाइनिंग, ये सारी की सारी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है। सो इफ वी थिंक दैट वी आर एम्प्लॉयबल टुडे, वी मे नीड टू थिंक अगेन कि 2030 पे हमारी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। और ये हम बात कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे सूट टाई लगा के बैठे हुए हैं, इमेजिन द ब्लू कॉलर वर्क फॉर्स। सो दीज आर द सीरियस चैलेंजेस जो अभी हमारे रेडार पे भी नहीं आ रहे, which is why the optimist in me thinks कि ये जो हमने पिछले 5-6 साल गुजारे हैं पाकिस्तान में, बहुत ही सख्त गुजारे हैं, पॉलिटिकल टर्बुलेंस, इकोनॉमिक टर्बुलेंस, सोशल टर्बुलेंस, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, इस सारे से शायद हमारी लीडरशिप ने सबक सीखा है। और ये मैं आई एम सेइंग दिस इज द ऑप्टिमिस्ट इन मी, और सबक ये सीखा है, एक्चुअली फोकस ऑन टर्निंग अराउंड पाकिस्तान, not in 5 years, but at least setting the direction so people know that the governments actually can look at the challenges in the eye and say कि हाँ, हमें challenges का मालूम हो गया है, अब उनसे निपटने का वक्त है। So that is the key thing. If we can do that, then I think we should be on our way to turning around Pakistan in the future. Thank you very much. Thank you, Mr. Fadusen, for your valuable insights. Now I would like to call the CEO of Telenor Pakistan, Mr. Irfan Wahab Khan, to please come on the stage for this session. Sir, can I please have you on the stage? Thank you. अच्छा जी, सेशन का बाकायदा आगाज़ करना है और मैं वन बाय वन आप सबको स्टेज पे इनवाइट करती हूँ। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द सीईओ ऑफ अटक रिफाइनरी लिमिटेड ARL, Mr. Adil Khattak, to please come on the stage. Thank you, sir. Islamabad, show some energy. Thank you. There are other guests who are on their way and they will be joining us shortly. आगे बढ़ते हैं जी। I would like to call the Chairperson, Competition Commission of Pakistan, Mr. Rahat Kunain Hassan, to please come on the stage. Ms. Rahat Kunain Hassan, to please come on the stage. Thank you. I'm so much looking forward to this session because the person who's going to host this, who's going to moderate this, is so vocal, so energetic. I'm going to reveal the name shortly. Then I would like to request the CEO of Roots International Schools and Colleges and MIUC, Mr. Walid Mushtaq Sahab. All right, I just got to know that he's on his way and he's going to join us shortly. May I please all right. In that case, let's not just waste our time and call the session chair, Mr. Usman Shaukat, who is the Director of Biolabs. Thank you for showing up. Thank you so much. I think let's begin with the session and the distinguished guests can join us later. I'll catch you guys in a bit.
Yes, Mr. Tausif H. Farooqi, who's the chairman of National Electric Power Regulatory Authority. Sir, can I please have you on the stage? Thank you. Over to you, Usman Saab. Top of all of this is the political will. If the political will is there, all of these things do fall in place. So the political will has to be there for these steps to be effective. Political certainty as well as a charter of economy. A charter of economy is also the need of the hour. So with these things in mind, I would like to hear from our panelists here today. So I'd like to welcome Mr. Adil Khattak, CEO Attak Refinery, also Mr. Irfan Wahab Khan, CEO Telenor Pakistan. Then we are glad to have Ms. Rahat Kunain Hussain here, Chairperson Competition Commission of Pakistan, Mr. Tausif Farooqi, Chairman National Electric Power Regulatory Authority, NEPRA, and Mr. Waleed Mushtaq and Sardar Ilyas Khan are on the way. So we are going to start with Mr. Irfan Wahab. Sir, if you would like to give us your thoughts on this topic today as to what is needed to turn around Pakistan and what, in your opinion, is the path to prosperity. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, thanks for having me, Jasa. It's a very pertinent question, and I would like to actually argue that the answer is not that difficult, to be honest. If you look at Pakistan, we are a nation of 230 million people. So our strength, which we say is our demographic dividend, our population, and especially the youth, right? When it's a unique combination, I think we're quite blessed that we are not one of those countries where there is an aging population. It's a young country. At least 100 million of us are very young. If you look at the correlation of population with the global or GDP of any country, it's quite obvious कि population का growth के साथ या GDP के size के साथ एक direct ताल्लुक है. दुनिया के 5 बड़े ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पे है, जिसमें अमेरिका है, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, इन सब की GDP काफ़ी हमारे निस्बत ज़्यादा है. और अगर आप ग्लोबल GDP की बात करते हैं तो ये 5 ममालिक कंट्रीब्यूट करते हैं 40% ऑफ ग्लोबल GDP. So you cannot deny that population has no role with the size of the economy. But unfortunately, when it comes to Pakistan, हम ज़रूर 5वें नंबर पे हैं, but हमारी GDP contribution, global GDP के is only 0.4%. So that's where we are really lagging. So जो हमारा population का advantage है, वो हमने बिल्कुल use नहीं किया. और अभी मेरे से पहले फहद भी बता रहे थे, दूसरा aspect productivity. जो population है हमारी, और उसमें कई वजूहात हैं. एक I'll argue के एक तो बहुत बड़ी और obvious reason ये है कि हमारी जो female population है, जो 51% है आबादी की, उनकी economic contribution is only 18%. So we have not really leveraged half of our
population actually towards economic development. When we compare with some other countries, especially मुझे इत्फाक हुआ फार ईस्ट में रहने का, जिसमें थाईलैंड, फिलीपींस में मैं काफ़ी डीपली मैंने स्टडी भी किया, और भी कंट्रीज साउथ कोरिया को देख लें, मलेशिया को देख लें, इन सब की जीडीपी 60 और 70 की दहाइयों में पाकिस्तान से बहुत कम थी, बट आज वो हमसे बहुत आगे हैं. बांग्लादेश इज़ अनदर एग्जांपल, जहाँ पर जो उनकी गारमेंट इंडस्ट्री है, जो कि आज सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर है, उसमें 40% वुमेन कंट्रीब्यूशन होता था, जो आज बढ़ के तकरीबन 80% पे आ गया. सो आई थिंक देयर आर सम फंडामेंटल ऑब्वियस थिंग्स विच वी आर मिसिंग. उसके साथ साथ अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये 0.4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, इसको क्या हम 2x डबल कर सकते हैं कि नहीं? और मेरे ख्याल में ये डबल करना बहुत नामुमकिन नहीं है. अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर कर लें, अगर हम अपने नौजवानों को स्किल्ड कर दें. आज हम क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम टेलीनॉर में बहुत से लोगों का हायर भी करते हैं. जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों के, हम 25,000 बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं आईटी की फील्ड में सिर्फ हर साल, ग्रेजुएट से ही है. इनमें से 10% के करीब एम्प्लॉयबल हैं सिर्फ. आप खींच के उसको 15% पे ले जाएंगे, 20 पे ले जाएंगे, 80% बच्चे जो वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, जिनको स्किल्स ही नहीं पता कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है. वी मिसिंग ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया की जो अगले 8 से 10 सालों में नई वेल्थ जनरेट होगी पूरी दुनिया में, मोर देन 50% विल बी एट द बैक ऑफ टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स कि जो हम जिसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, वी ऑल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, ये वो स्किल्स हैं जिसकी आज भी दुनिया में बहुत ज़रूरत है. यूरोप अलोन हैज़ अ ह्यूज डेफिसिट ऑफ स्किल्ड लेबर. दे हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स विच आर स्टिल वेकेंट. तो क्यों नहीं हम अपनी यूथ को प्रिपेयर कर सकते विद बेहतर स्किल सेट्स के साथ, विद मेंटरिंग एंड कोचिंग, सो दैट दे आर रेडी फॉर द फ्यूचर. बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी कैन इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स. विद नो डिसरिस्पेक्ट टू द ट्रेडिशनल सेक्टर्स, देखें हम टेक्सटाइल में शायद अपनी एक्सपोर्ट्स आसानी से डबल नहीं कर सकते, बट आईटी में, आईसीटी के सेक्टर में हम इजीली डबल बल्कि क्वाड्रुपल कर सकते हैं अगर हमारा फोकस हो. इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक स्ट्रैटेजी, एक विजन की ज़रूरत है. देखें आज हम दुनिया में कहीं पर भी देखते हैं, अगर हम सिंगापुर की एग्जांपल लेते हैं या यूएई की एग्जांपल लेते हैं, ऑल दोज कंट्रीज़ हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजीज. यूएई के अंदर आज आपको मिनिस्टर फॉर इनोवेशन मिलेंगे, जो और मिलेंगी इनफैक्ट खातून है, जो कि गवर्नमेंट में हाईएस्ट लेवल पे बैठ के दे पुशिंग एंड मेकिंग श्योर कि इनोवेशन जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है. और सऊदी में आप जाते हैं उम्रा करने के लिए, तो आप देखते हैं विजन 2030 के बोर्ड्स लगे हुए हैं हर जगह पे. They are driving the whole society actually towards more, less dependency on oil, but more dependency on knowledge economy, on innovation. So सबसे पहले तो हमें vision की ज़रूरत है, एक अपने strategic goals करने की ज़रूरत है, and then we need to all work together because ये खाली government का काम नहीं है. We have to come together, जिसमें private sector है, corporations हैं, academic institutions हैं, development sectors हैं. All of us have to work together to make sure कि we conducive environment करें and to make sure कि वो implement हम कैसे करेंगे. So I think these are my opening remarks. Thank you, Irfan Wahab Sahab, for the very insightful remarks. Now I would like to request Mr. Adil Khattak, CEO Atak Refinery Limited, to kindly share his thoughts on the subject as well. Over to you, Adil Sahab. Thank you very much for giving me this opportunity to share my thoughts. I'll try not to talk about what you've already addressed, the issues you've already talked about, और आपसे पहले फहाद साहब ने अपनी स्पीच में जिक्र किया कि क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं. तो ये सारी बातें, डेफिनेटली दीज आर चैलेंजेस. लेकिन जो फहाद साहब कहते हैं ना कि हम बड़े मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, तो हमारी तो सारी ज़िंदगी इसी में ही गुजर गई कि हर बार यही होता है कि बड़े मुल्क बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है. तो बात यह है ना कि वी डोंट लर्न फ्रॉम our own experiences, our own history. This is, I think, our biggest tragedy. We don't learn for whatever wrong we have done up till now. तो मैं अपने comments, ये जो issues है, like IT के importance है, population की बात इरफान, और बाकी है polarization है society में, ये तो है ही serious challenges. लेकिन इस वक्त मैं देखता हूँ ना, अभी recently IMF का ज़्यादा बातें हो रही है, तो I think all the issues which IMF is trying to address, or which we are sort of forced to listen to them, most of these issues relate to the energy sector. इस वक्त हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ अगर मैं कहूँगा तो हमारी
मिस गवर्नेंस और मिस प्लानिंग है एनर्जी सेक्टर में। यहाँ फारूकी साहब मौजूद हैं एज ए रेगुलेटर, और ये काफ़ी सुनाते भी रहते हैं, लेकिन पता नहीं इनकी बात भी कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। मतलब उससे आप स्टार्ट करें, एनर्जी मिक्स से ही हमने कहाँ काम गए, कभी हम एक साइड पे चल पड़ते हैं, कभी हम दूसरे साइड पे चल पड़ते हैं। मैं एक ही सिंपल मिसाल आपको देता हूँ मिस गवर्नेंस के मिस प्लानिंग की, कि नाउ यू नो द गवर्नमेंट इज पुशिंग एवरीवन कि जो कोल पावर प्लांट से दे शुड बी यूजिंग आवर ओन इंडिजिनस कोल। नाउ व्हेन वाज दिस कोल रिजर्व डिस्कवर्ड? Somewhere in the 90s, more than 25-30 years back. We knew at that time that we have 175 billion tons of coal lying there under the ground. हमने उसका क्या हशर किया? 15-20 साल तो the fight was going on between Sindh government and federal government कि किसकी प्रॉपर्टी है, रिसोर्स भी 15-20 साल में ज़ाया किए। फिर बात चल पड़ी कि ये कोल इट कैन नॉट बी यूज फॉर पावर जनरेशन, इसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी, उसमें ये खराबी है। कहीं 5 साल पहले जाके कहीं पहले पावर प्लांट का इब्तिदा हुआ, और अब माशाल्लाह और भी आ गए हैं। एंड यू सी करंटली द लोकल कोल इज मच चीपर देन व्हाट इज बीइंग इम्पोर्टेड। लेकिन इस दौरान नंबर ऑफ कोल प्लांट्स वर सेट अप ऑन इम्पोर्टेड कोल, एंड इन अ प्लेस लाइक साहिवाल विच इज सो फार अवे फ्रॉम द पोर्ट, अ पावर प्लांट बेस्ड इन साहिवाल ऑन इम्पोर्टेड कोल। जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव बीन डूइंग ओवर हियर। इसी तरह जिस फैक्टर की भी आप बात करेंगे, ये ना अभी इरफान ने बात की कि हमें अल्लाह ताला ने जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन का, एंड बिलीव मी कि दिस वेरी पॉपुलेशन, हम यहाँ रोते रहते हैं ना कि हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये बुरा है, वो बुरा है। द सेम ह्यूमन रिसोर्स आउटसाइड ऑफ द कंट्री दे हैव डन वंडर्स एवरीवेयर। कहीं भी आप जाएं, इन रिमोट प्लेसेस लाइक इवन जापान एंड कोरिया, एवरीवेयर यू सी पाकिस्तानी डूइंग वंडर्स। So there's nothing genetically wrong with us. So it's basically the environment in which we are working. पॉलिसीज है गवर्नमेंट की। तो बात यह है कि अब ह्यूमन रिसोर्स की बात अगर हम करें तो आप एनर्जी की मैं बात करता हूँ कि अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड अस विद एनॉर्मस रिसोर्सेज। मैंने सिर्फ कोल की बात की, आप हाइडली की बात करें, मोर देन 50,000 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी अवेलेबल। आप सोलर की बात करें, आप विंड की बात करें, लेकिन हमने किया क्या है? सो वी सेट अप इन पंजाब 3 प्लांट्स बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड LNG, 1300 मेगावाट ईच। राइट नाउ मेरे ख्याल में फारूक साहब को ज़्यादा पता होगा, शायद या चल भी रहे कि नहीं चल रहे, बिकॉज देयर वे डाउन ऑन द मेरिट लिस्ट बिकॉज LNG प्राइसेस शॉट अप लाइक एनीथिंग। अगेन इट वाज इंपोर्टेड फ्यूल। तो ये इस तरह की बातें जो है ना, और फिर ये जो स्पेशली जो आगे सारी उम्र इसी में गुजर गई, पता नहीं कब से हम यही सुन रहे हैं कि प्राइवेटाइज होंगे, स्टील मिल इज सपोज टू बी प्राइवेटाइज, PIA प्राइवेटाइज होगी, HMC प्राइवेटाइज होगा। ज़िंदगी हमारी इसी में गुजर गई, कभी प्रोग्रेस नहीं होती, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है कि प्राइवेटाइज हो। एंड यू नो एक जिस तरह क्लीशे ये बन गया है कि लेस गवर्नमेंट इज गुड गवर्नमेंट, अनलेस वी अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग। गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना इंडस्ट्री को। आप रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करें। नेपरा के यहाँ बैठे हैं फारूकी साहब, आप ओगरा को स्ट्रेंथन करें, बाकी जितने भी हैं आप बैठी हुई हैं पर कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान की, इसको आप स्ट्रेंथन करें। गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि इंडस्ट्री को चलाए, जहाँ भी चलाई है तबाही है मचाई है। तो दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल इशूज विच वी हैव। तो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स तो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन साथ साथ ये जो बेसिक इशूज़ है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इफ़ यू रियली वांट टू टर्न अराउंड दिस कंट्री। मैंने इसी तरह 10 साल बाद भी हम बैठे होंगे, अब यही कह रहे होंगे कि जी बड़े मुश्किल हालात में से हम गुजर रहे हैं। तो राइट नाउ दीज वर थिंग्स आई कुड टॉक अबाउट, एंड फिर आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Adil Khattak Saab, for the very insightful remarks. Now I would like to request Mr. Tausif Farooqi, Chairman NEPRA, to kindly share his thoughts on the subject as well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इजाज़ साहब पता नहीं लास्ट मोमेंट में गायब हो गए यहाँ से, तो उनका बुलाने का शुक्रिया। इजाज़ साहब थैंक यू। मैं जब भी और बड़ा फ्रीक्वेंटली मैं जाता हूँ फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान से मिलता हूँ, और उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ जो बड़ा रिलेटेड है आपके आज के इस टॉपिक से। मैं उनसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क कब बनेगा। तो 3-4 लोगों से मैं सवाल उनको मौका देता हूँ जवाब देने का। हर आदमी डिफरेंट एक बात करता है, तो उनको मैं एक बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान उस दिन दुनिया का बेस्ट कंट्री बनेगा जिनमें से जब तक इस हॉल में बैठे हुए सब लोग
अपनी अपनी फील्ड के बेस्ट लोग नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं एक बिलो एवरेज चेयरमैन नेपरा हूँ, मैडम मेरे साथ बैठी हैं, वो एक बिलो एवरेज चेयरपर्सन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, और हम लोग जितने लोग बैठे हैं हम लोग बिलो एवरेज हों और सिर्फ दूसरे के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हों, और हम कहें कि पाकिस्तान टर्न अराउंड हो सकता है। पाकिस्तान टर्न अराउंड उस दिन होगा जिस दिन हम में से हर इंडिविजुअल अपने आप को टर्न अराउंड करेगा। हम चाहते तो ये हैं कि हम दुनिया की बेस्ट कंट्री बने, लेकिन क्या हम अपनी एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं? क्या हमारी अपने मुल्क के साथ वो कमिटमेंट है जो बाकी लोग अपने साथ कर? मैंने कहा शायद आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। तो जो हमारा आज का टारगेट है कि हम अपने आप को टर्न अराउंड करें, ये बहुत मुश्किल भी है और ये बहुत आसान काम भी है। आसान इसलिए है कि जैसे अभी मेरे फाजिल दोस्त ने बताया कि वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन। सबसे बड़ा जो इसके पीछे एक कैटलिस्ट है या एक फोर्स बिहाइंड प्रोग्रेस है, वो होती है आपकी यूथ। बूढ़े लोग हम जैसे किसी मुल्क को टर्न अराउंड नहीं कर सकते, और हमारे पास माशाअल्लाह यूथ की कमी नहीं है। 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ लेस दैन 30 ईयर्स एंड मोर देन 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ लेस दैन 15 ईयर्स। यही हमारी होप हैं। मैं भी 20 साल अबू धाबी में रहा हूँ, दुनिया की 45 नेशनलिटीज़ के साथ मैंने काम किया है, और मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ, ये मेरी कन्विक्शन है, पाकिस्तानीज़ आर सेकंड टू नन। दुनिया की किसी नेशनलिटी के साथ आप हमारा कंपैरिजन करें, हम किसी चीज़ में भी उनसे पीछे नहीं हैं, बल्कि शायद थोड़े से ज़्यादा ही हैं। तो लेकिन होता क्या है कि इंडिविजुअल फ्लावर्स के तौर पे तो हम बड़े हसीन हैं, बड़ी अच्छी खुशबू भी देते हैं, बस समहाउ जब हम एक गुलदस्ता बनते हैं, गॉड नोज़ हम पे क्या कर्स है कि हम उस तरह से डिलीवर नहीं करते। इंस्टेड के हमारे जो रिजल्टेंट है वो इंडिविजुअल से बेहतर हो, वो एक्चुअली एक दूसरे को नलीफाई करना शुरू कर देता है। तो हमें मनहसुल कौम सबसे पहले एक कमिटमेंट करने की ज़रूरत है। देखें, ये वो नेशन है जिसने दुनिया में अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना के दिखाया डिस्पाइट ऑल द इंडिजिनस सोर्सेज, और हमारे पास कोई ऐसी बैरूनी इमदाद नहीं थी, हमने फिर भी ये काम कर दिया। अभी हम JF थंडर, फिर वी आर सेकंड टू नन एज फार एज कंट्रोलिंग द टेररिज्म इज़ कंसर्न। दुनिया आके हमसे पूछती है आपने ये कैसे किया। तो ये वो कौम है जो जब डिसाइड कर लेती है कि हमने कुछ करना है तो हम कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि हमने अपने आप को टर्न अराउंड करना है, और इसीलिए आज हमारी जो सिचुएशन है हम उसमें हैं। लेकिन मेरी ये कन्विक्शन है कि हम एक स्प्रिंग की मानंद बिल्कुल दबे हुए हैं, और हमें जो ही मौका मिला और हमने जैसे ही इस पे काम किया, इंशाल्लाह विल हैव द टर्न अराउंड। कुछ चीज़ें जो नेपरा में मैंने की टर्न अराउंड करने के लिए पाकिस्तान को, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं, यू हैव टू फिक्स द इंडस्ट्री। इफ़ यू वांट टू फिक्स द इंडस्ट्री यू हैव टू डू द वर्क ऑन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसमें पावर सबसे क्रिटिकल चीज़ है। तो उसमें पहला मैं जब यहाँ आया तो पाकिस्तान में हमारी पावर सेक्टर एक खुदरो झाड़ियों की तरह बढ़ रही थी, तो मैं IGSEP लेके आया, इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, जिसमें कि डिमांड बेस्ड सप्लाई लेके आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सेकंड, हमने जब वापडा को अनबंडल किया तो हमने ख्वाब देखा कि हम पाकिस्तान की होल सेल मार्केट को ओपन अप करेंगे। तो वो मैंने अभी पिछले साल 31 मई को अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पावर सेक्टर होल सेल मार्केट को 1 मेगावाट से ऊपर उसको मैंने ओपन अप कर दिया। एंड नाउ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ लाइक एनी अदर कमोडिटी। इसके अलावा जब मैं आया तो आई वाज शॉक टू नो कि 5.5 करोड़ पाकिस्तान में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए मैं एक माइक्रो ग्रिड का लेके आया एक इनिशिएटिव, और टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी अभी हमने 4-5 दिन पहले एक 600 मेगावाट का सोलर का 600 मेगावाट सोलर उसका RFP अप्रूव किया है। और अभी कल ही आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी, जिस पे अभी मुझे एक वर्ड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस या थैंक्स भी मिला
मेरी कुलीग की तरफ से कि आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी इन पाकिस्तान। इस तरह के बहुत सारे काम किए, बट ये है कि अगर हम जिस दिन इंशाल्लाह सब मिल के ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान को ठीक करना है तो हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Tawseef Farooqi Saab, for your valuable thoughts. Now I would request Chairperson Competition Commission of Pakistan, Rahat Kunan Hassan, to share her point of view. Thank you. I was here in the morning as well because I thought if I want people to listen to me, I should be there to listen to them as well. So I was here from 10 to 1. A lot of things have been said. I would like to restrict myself to my mandate because I think right now, you rightly pointed out कि हमने 3 चीज़ें क्या हैं जिसको focus करनी. You said export emergency लगानी. Good question. How do you do that? Are you competitive? Competitiveness is the key for becoming an export-led nation. Competitiveness would come not overnight, it's a long haul. What policies are there to set the direction? So have we identified, I recently had a meeting also with Trade Development Secretary, and we were just discussing as to what are the products that could be identified. And they said, people have even at times given us, okay, we give you a margin, $1 billion, please export. And they said, we don't have the products then to export. For export, you need imported raw materials. So you need an enabling environment which is connected to one thing another with another. Nothing is in isolation. And I always believe that we need policies as a catalyst to bring the change. So that's first and foremost. Now, I would not go into political will or the Charter of Economy. As a regulator, I've learned decision making is the most important factor. And in Pakistan, unfortunately, you are accountable more for action than for inaction, right? What can we do? We are not here to lament, oh, this has been the cause. I just want to say that in various sectors of economy, very important ones, while we blame on one hand that we may not be having effective policies, we have economic actors whom we have witnessed are indulging in anti-competitive practices. Very, very important sectors, be it banks, be it auto sector, be it cement, be it sugar, be it edible oil, poultry, you name it. But we have unveiled cartels, and many a times, several times I've been said, oh, you've imposed 77 billion penalty, what have you recovered? Competition Commission is toothless, they haven't been able to do anything. Really? Do you think so? In a population which is 230, where competition agency has less than 150 employees, if in 2.5 years we have completed 45 investigations unveiling cartels, anti-competitive practices, deceptive marketing, market abuse, it deserves no recognition. It's commendable. Yes, Very it commendable. is. Yes, it is. There's a round of applause for that, please. And I just want to say one thing. The visibility for the consumer and for other stakeholders will only come when we will conclude the judicial review. It's important to understand. I'm not here for an agenda, oh, Competition Commission has suffered this or no. Just an example. For the last 2 months, I'm one-woman commission. Preceding 8 months, it was 2-member commission. Preceding that, when I joined in 2020 July, it was 4-member commission. But you know what? I believe that our focus always has to be what is that we can do, not what we can't do. That is why we have been able to complete so many investigations. We've been doing a lot of advocacy. American Bar Association had actually invited me last year to share how we could actually, despite all economic and political challenges, were able to exercise and demonstrate our independence. So please, everything is connected. If you want to be competitive, policies have to be in place. And commitment cannot be only from the government, but from the economic agents as well. That's very, very important. I'd just like to
share a few things that require, I mean, I think there were a lot of comments that I had heard, and I just wanted to share that we keep saying Pakistan is a very resilient nation. Okay? Is that a choice? Or has it been thrust upon us? Should we feel lucky? Or should we be feeling unfortunate about it? But resilience in itself is a virtue, which you do not acquire but through wish. It is through circumstances that you become resilient. Now, if you happen to have that virtue, that means you can overcome difficulties. So I'm inherently an idealist, inherently an optimist, but still there has to be target. What I believe right now most important is prioritization. Competition, at the root of competition and competitiveness is education. After that, what do you need for survival? Health. What do you breathe in? Air, water. These are the basic things that Pakistan is lacking. When you talk about digital economy, you talk about all the IT development, well and good, and it's very, very important. But please take the population from the basics to the average. So do it simultaneously, but we must chalk out a priority plan. I don't know whether it is or not, but I think it's important to share that the head of FTC was visiting us, Competition Commission, in my previous term when I was there. And he had a very simple question to ask. Does your organization know what are the top 3 priorities you have? And that is when we talk about strategic vision. 1, 2, 3, yes, export, 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 but then what with export? What are you allowing businesses? We keep saying a lot of buzzwords as we say about good governance. I'm sorry, I take this opportunity to state, because I have been on several boards, listed companies, otherwise. I thought on these boards, the most difficult thing to state was the truth. Most simple thing was to ask a question and to get a direct answer, right? So please start with little things and then you'll achieve big. It never so happens that overnight you'll achieve something big and little things will be rectified. It's the other way, starting from ourselves. So I start from my organization. I invite all of you to come and check what we have done so far. I'm not here to get accolades for that or nothing. All I'm saying is we've been able to contribute in documenting the economy, and it was a significant step. I'll wish everyone in their role to do their part, and the rest will be taken care of. Thank you. Thank you. Thank you, Rahat, Kunan, Hassan, for such great and pertinent points, and it's commendable what you've done with the limited resources. I know you're not here for accolades, but they should be given where they're due. So thank you so much for your leadership and the thoughts. Now I would like to welcome Sahar Tarar. She is the CEO of Second Passport. Welcome, and I would like to hear your thoughts on the topic today, Turnaround Pakistan and the Path to Prosperity. Your thoughts, please. Thank you so much. First of all, I'm sorry for being late, everyone. I really feel that the type of business that I'm in, it really looks like that it's damaging for Pakistan. But I feel that actually it's quite opposite. We are encouraging people from overseas to invest in Pakistan, and we are trying to give opportunities to local Pakistanis to expand their businesses abroad. It's my company's name is Second Passport World. That means that it's a second option. You don't have to give up your first passport for it. So I really feel that there are a lot of sectors, energy sector, you can say, or is it better now? Okay. So our textile industry and our jewelry industry or other manufacturing different sectors, I think we can expand the businesses. We do not have to believe in the borders. We can touch international investment pockets. We can expand our businesses to a point where we are bringing in revenues and profits from all around the world to Pakistan. One very important factor over here is what I feel is that most of the people here, they suffer because of our implementation, like lack of implementation of the policies. And then all of a sudden a fine is imposed or a drastic measure is taken, which is not even done in a very legitimate way. It is normally it's like haunting the business community.
So I really feel our business community needs to be supported, and they need to be given a very fair chance to do business. Right now, a lot of people come to us complaining about the same thing, that obviously everyone is feeling very pessimistic right now. They feel that the whole country is going to go towards a default, which is obviously not going to happen. We as Pakistanis, as we said before, we are a very resilient nation. We'll come through anything. We can prove ourselves in any situation. We have done that before. We'll do it in future as well. But still, I really have a strong feeling that we, business community, we need to have a representative in the government. People sitting in the parliament, most of them have no idea how the economy is going to work. Those are local grassroots politicians who know about the basic things like how to get votes, how to deal with the issues that people are facing on ground level. But when it comes to macro and microeconomics, they are not aware. Most of them are not even equipped with the correct knowledge. And I think there should be a federal minister at least from the business community, and we all should come forward and take some kind of initiative towards it. And I think a lot of CEOs from here are quite capable of taking up that role and moving forward with it. Yes, we can form a committee and come up with better suggestions, and everyone is quite qualified for that. So I feel that we all need to add our contribution, not only business-wise, otherwise as well in the political circle of our country as well. So I think that would be pretty much it from my side. Thank you. Thank you, Ms. Tar, for your thoughts. And I would like to welcome two of our participants who have joined us a little later in the proceeding. Mr. Sardar Yasser Ilyas Khan, who is the CEO and Group Director of Centaurus Mall, and also the former President of the Islamabad Chamber of Commerce and Industry. Sitting to his right is Mr. Waleed Mushtaq, CEO, Roots International Schools and Colleges. Welcome, both of you gentlemen, for joining us today. So I would like to put the same question to both of you, and I'll start with you, Mr. Yasser. And the question that we had today was, of course, the theme is Turn Around Pakistan and the path to prosperity. I had laid out three things in the beginning that I believe are the keys to prosperity, in my opinion, and I would like to hear your thoughts. One, that we need to institute an export emergency immediately. Secondly, enhance the FDI, the foreign direct investment that we have in the country, which is absolutely not up to the mark. And third, have the political will to implement these things. So I would like to hear your thoughts, and if you could enlighten us with your thoughts on the subject. Stand up. Assalamu alaikum, respected members. Very good afternoon, and assalamu alaikum everyone. I have a tendency of standing up and presenting my case, so I'd like to reach out to most of the audience because मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे young youth यहाँ पे बैठा हुआ है, and we're losing your attention, so I thought I'd get across to you by standing up and moving across. A question for all of you, which I want to start with. I need to know how many of you, since we're talking about foreign passports, are actually planning on applying overseas and leaving Pakistan before I present my case. Kitne, be honest with yourself, चाहे वो businessmen हैं, students हैं, youth हैं, anybody, you're planning on leaving Pakistan, whether it's for personal or professional growth. Can I have a raise of hands? Yeah, guys, so next passport right here. So I saw you guys, how many more? So can I say 10% of the audience, maybe more? The reason I'm asking this is I've seen this in a lot of the educational institutes that I work with, Bahria and all the universities we interact with. And this is the first thing I ask. It shows you a reflection of the confidence, and that's the confidence we're trying to build from this forum. Ijaz Saab ko hum shukriya ada karenge for taking this initiative. Look, we are all stakeholders, including yourselves. We're perhaps more than you guys are because we have a lot more at stake in terms of financial investment in the country. अब इसके दो पहलू हैं देखने के. एक आप अपने point of view से देख रहे हैं कि we're going to go overseas, but then you have these people right here. My brother from EO, Hassan Saab, he's the president of Entrepreneurs Organization sitting in front of you, educated abroad. Usman Shokat Saab, educated in the US, having worked as a US banker, now here as one of the fastest growing companies. MashaAllah, he was the highest taxpayer in pharmaceuticals this year, so we're very proud of him. Waleed Mushtaq Saab, himself an entrepreneur and also educated from abroad, myself as well. तो हम सब दुनिया देख के जो एक कहावत है पाकिस्तान में, जो हम कहते हैं दुनिया में और पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं,
the grass is greener on the other side, or it looks greener on the other side. लेकिन इसका दूसरा पहलू है जिसकी वजह से हम पाकिस्तान आए वापस, हम ये पूछते हैं कि वो घास यहाँ पे भी तो सब्ज हो सकता है. So why not make the grass greener in Pakistan as opposed to going for the grass on the other side? So my panelists said something very rightly. This is the same question I have because before coming into this conference, I was on a phone call and I'm extremely displeased. I was told that this equipment which we have ordered for our project, which was ordered last May, has not yet been imported. It's a multi-million-dollar equipment. I was extremely displeased because this is a big company. It's a CEO of a company that knows of the case, and yet they did not stand on their commitment. So सबसे पहले जो हम best business practice की बात करते हैं, हम वो चीज़ embed करें, exhibit करें अपने आप में, अपनी daily lives में. It's not just CEOs, but as employees, as anyone who's practicing anything and anywhere. कि आप जो ज़बान देते हैं, forget paperwork, due diligence तो बात की बात है. आप एक ज़बान देते हैं, उस पर कायम रहें कि ये पहली चीज़ सिखाई जाती है. अगर गोरों को हम देखते हैं, वेस्ट में कोई चीज़ देखें, मैं आपको आज की एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं बाहर जाऊँ, मैं उनको टाइमलाइन कम्युनिकेट करता हूँ, तो यकीन करें आज भी यूरोपियन, चाहे वो मिडल ईस्ट के लोग हों, पूछते हैं हमसे कि आर यू कम्युनिकेटिंग द पाकिस्तानी टाइमलाइन, आर यू टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम अगले हफ्ते की बात करेंगे, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ कहेंगे तो कहेंगे नेक्स्ट ईयर. ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. दिस इज़ द फंडामेंटल इशू that we have to implement. अगर हम think global, act local की बात करते हैं, it applies in every sense, not just in business. कि आप वहाँ concept ला के apply कर लें, concept के अलावा उसकी जो practice हैं, उसके designs हैं, SOPs हैं, protocols हैं, procedures हैं, all of that has to be as per international standards. So as a qawm, हमने develop होना है अपने आप को, और साथ साथ अपनी human resource को develop करना है. तो सोच, खान साहब ने भी कहा, और इसी में agree करता हूँ, इत्तेफाक है हमें, कि हम सबसे पहले अगर change लानी चाहते हैं इस मुल्क में, तो सोच हमें अपनी तब्दील करनी पड़ेगी. With regards to my brother's question about how can we revive Pakistan, what is the future of Pakistan? Look, इसमें जो core एक issue है, हम बात करते हैं हर जगह पे, वो है sustainable development का. And sustainable development comprises of three main aspects. You have to look at the environmental, you have to look at the social, and you have to look at the economic aspect. Economic for me is the backbone. Any country that has the economic strength can surpass all challenges. अगर हम US की बात करते हैं, US की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा नहीं है, 330-340 मिलियन की बात होगी, लेकिन they are financial strength. इंडिया की भी बात करें, उनकी तो financial strength भी है, और in terms of size they're huge, 1.2 billion के करीब है. But it's all about money at the end of the day. They have the money, they can campaign against Pakistan all day long. We don't have the money. तो हम कश्मीर आज़ाद करने की बात तो छोड़ें, उसके अगेंस्ट हम कैंपेन भी नहीं कर सकते. हम जब आज़ाद कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, सारा फंड हम लोग डोनेट करते हैं. The business community has to put up the posters across Pakistan to say आज़ाद कश्मीर आज़ाद करें, मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करें. This is fundamental. So we need a strong country. We have to have a strong economy. Now, sustainable development. The core issue is we have to focus on the needs of today's generation without forgoing the needs of future generations to come. तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे समंदर का पानी आप आज पी लें, क्योंकि आज हम पी सकते हैं. ये नहीं सोच रहे कि जो आने वाली जनरेशंस हैं उनका क्या होगा. तो बेसिक्स जो पाकिस्तान के हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा. Starting with policy, as my panelist rightly said, it all starts with policy. पॉलिसी होगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, पॉलिसी होगी तो आपकी जो यूटिलिटी कॉस्ट है वो कम होगी, पॉलिसी होगी तो हम जाके रोड शोज़ करेंगे. आज भी अगर हम इंडस्ट्री की बुनियाद पे हम जाके इंडिजिनस प्रोडक्शन तो दूर की बात है, हम अगर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ आवर फॉरेन मिशंस हैव नो आइडिया कि पाकिस्तान के पास है क्या. आई नो दिस बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद द एम्बेसीज, द काउंसिल्स एज अ प्रेसिडेंट, एंड वो कहते हैं आप लिस्ट दें मेड इन पाकिस्तान की. तो मैं पूछता हूँ कि क्या आपके पास कोई डायरेक्टरी नहीं मौजूद जिसमें आप बता सकें कि ये 100 आर्टिकल्स फैसलाबाद से आ रहे हैं, सियालकोट से आ रहे हैं. हम नहीं बता सकते. I'm not living in Sialkot. Then I have to get that data, give it to my consulate in Denmark, give it to my consulate in UK. उनको मैं बता रहा हूँ. This is not my job. This is Ministry of Commerce role कि वो अपना रोल अदा करें, जाके बताएं कि यार ये products यहाँ पे सेल किए जा सकते हैं. Do the road shows, because जब तक आप दुनिया को नहीं बताएंगे what Pakistan is capable of, the world is not going to know. The markets are huge. You're competing with 180 different countries that specialize in something. हम बहुत बेहतर हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिहाज से. ह्यूमन रिसोर्स बहुत सस्ती है पाकिस्तान में, एंड वी आर नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन दैट. स्किल के लिहाज से ये जो फर्नीचर आप लोगों के सामने इस पे आप बैठे हुए हैं, हमारी लोकल लाहौर की कंपनी है कॉल मॉकम. ये सरीना का तकरीबन सारा फर्नीचर मॉकम ने बनाया, और सम ऑफ द बेस्ट स्टफ इज कमिंग आउट ऑफ देम. सॉलिड वुड की वो चीज़ें बनाते हैं. जितनी आप जॉइनरी CNC का काम देख रहे हैं, एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट. अगर ये जाके हम UK में बेचें, आई कैन प्रॉमिस यू अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट कंपेयर टू व्हाट्स अवेलेबल इन द UK. एंड टाइम, ये कुर्सी आज आपको एक हफ्ते में देंगे, UK में आप ये कुर्सी ऑर्डर करें आपको 6 महीने के बाद मिलेगी. बट वी आर नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन दिस. सेम थिंग विद एग्रो. Guys, we are extremely, in terms of potential, 5th largest producers of mango.
We are contributing 8% to the world in terms of rice, 5th largest in terms of rice and 5th in terms of cotton. हम अगर बात करें आपकी जो minerals हैं, we have the 5th largest reserves of minerals. Stones की हम बात करें, जो variety है, मैं आज भी stone वालों के साथ बैठा हुआ था, marbles, gems. I'll tell you interestingly, आज भी, despite having all this beautiful marble, आज भी हम blasting करके 70% ज़ाया कर रहे हैं, gems को भी और marble को भी. So transfer of technology. When are we going to get the technology that China has, या the rest of the world has? Gems की बात करें तो 90% दुनिया के stones की processing इंडिया में हो रही है. Technology. अब मैं आपको बताऊं कि lab diamonds बनाए जा रहे हैं. Forget sourcing diamonds from Africa. Lab diamonds are artificially created diamonds, but they're as good as real diamonds. So a diamond detection device will check it for you. It's actually the same properties of a real diamond. So dunya kahan evolve kar rahi hai, and we're still, I feel like we're in a stone age. So guys, it's not you, it's not the human resource, it's not the environment, it's not the country, it's not the resources, it's policy. It all revolves around that, and we need to work on policy for the betterment of Pakistan, and that's how we're going to move forward. Even today, the sort of cash in this country is going to shock you. Abhi last week auction hua hai CDA ka, 8 arab rupees ka aapka plot bika hai blue area mein, total collective 40 arab rupees ki sale hui hai auction mein, everything was sold. And फिर हम कहते हैं कि मुल्क मकरूज़ है. ये कुछ दोस्त और हम डिस्कस कर रहे थे, अगर ब्लू एरिया का पूरा स्ट्रिप हम ऑक्शन कर दें, आके प्रॉमिस की जो पाकिस्तान की लाइबिलिटीज़ हैं हम वहाँ से निकाल सकते हैं. अगर मार्गला हिल्स की तरफ हम आएँ, जैसे कैलिफोर्निया हिल्स हैं आपकी, बेवरली हिल्स की हम बात करते हैं, आज F6 में मेन मार्गला रोड के ऊपर 1.5 अरब की प्रॉपर्टी बिक रही है. अगर मेन मार्गला के ऊपर जाके पहाड़ियों पर हम अगर एक 4 कनाल का प्लॉट निकाल लें, आई प्रॉमिस यू 2 बिलियन से ज़्यादा का खाली प्लॉट होगा, which I'll buy, Walisa will buy, because we know it's worth it. So I'm telling you the money is there. फ़र्क सिर्फ ये है कि सिर्फ 3 से 4% लोग टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. And then we talk about fiscal deficit and current account deficit. पैसा आएगा तो आपका बैलेंस होगा ना. And ये जो मजाक किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ IMF वाला, I'm telling you, me and Waleed were just talking about this now, it's a joke. Because the capacity of Pakistan's exports annually in terms of our resources, guess कितनी होगी? Guys, सिर्फ एग्रो की बात करें तो $100 billion की हम एग्रो की बात कर सकते हैं, export. If we talk about gems and marble combined, $50 billion की मैं बात कर रहा हूँ. I'm giving you stats, actual stats, which I've taken from across Pakistan. Pharmaceutical की बात करें, अगर खाली अफ्रीका मार्केट में हम जाएं तो $3 billion की हम खाली अफ्रीका मार्केट को टैप कर सकते हैं. Because we're inexpensive. अगर वहाँ $5 की $10 तो हमारी $1 की होगी. Beer की मैं example देता हूँ, controversial topic है. Beer is made in Pakistan. Heineken beer से अगर compare करते हैं, अगर वो भी $5-6 का, हमारा $1 का होगा. Murray Brewery is making the same quality beer, and we're very proud of it. हम अपनी इस्लाम को, you cannot become an idealist. You cannot do that, because you need to understand that you need to accept where the world has become globalized. We are a global economy and we need to move forward without foregoing your own values. हम ये नहीं कहते कि आप पिएं. But this is a business. You have to promote yourself. Every single thing should be able to sell. Tourism की बात करें, सिर्फ northern region के अंदर अगर दुबई जैसा मुल्क, I'm not talking about दुबई जैसा शहर, UAE की बात नहीं कर रहे, हम दुबई की बात करें, दुबई की कलेक्टिव आबादी UAE की मिला के 18 लाख होगी तो 2 लाख दुबई की कर लें. मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि दुबई में जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है GDP में टूरिज्म की तकरीबन ऑलमोस्ट $40 अरब है. 40 अरब वो निकाल रहे हैं. अभी जितना ये दुबई एक्सपो हुआ था, it was a tourism gimmick. Why can't Pakistan do that? हम 50 से 60 अरब नॉर्थ से निकाल सकते हैं, जो आपका KP के रीजन है, AJ के रीजन है. We have the peaks, we have the mountains, we have the snowfalls, we have all 4 seasons. Gwadar wali side पे जाएं, you have the best beaches, but we have no tourism policy. I've been to the Ministry of Commerce. I've begged them कि अगर मैं होटल बनाता हूँ, it'll take me 10 to 15 years to get that money back. आप उसको reduce कर लें ड्यूटीज़ को, कोई सब्सिडी दे दें ताकि लोग होटल्स बनाएं, यहाँ पे थीम पार्क्स बनाएं. हम यही पैसे जाके दुबई में खर्च करते हैं, पेरिस में खर्च करते हैं, लंदन में खर्च करते हैं. आपके पास F9 पार्क जैसे लोकेशन है, यहाँ पे हर महीने एक फेस्टिवल हो सकता है, चाहे वो किसी तरह का भी, whether it's a food festival, whether it's a theme park, whether it's a carnival. This is one way to generate revenue for the city. We don't have any toll system like Salik in Dubai has about 1.7 billion generation सालाना, जितनी गाड़ियाँ सिर्फ दुबई के अंदर जा रही हैं. पेट्रोल का मैं एक एडवांटेज और बताऊँ, अगर KP के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर AJ के लोग आ रहे हैं, अब्टाबाद से लोग आते हैं, तो they're coming into your city, congestion charges लगा दें. There's multiple sources of revenue, लेकिन गवर्नमेंट को एक ही चीज़ नजर आती है कि ये बिजनेसमैन है, ये 1 करोड़ दे रहा है, सिर्फ 5 करोड़ हमने लेने हैं. And tax net को enhance नहीं किया जा रहा. You're scrutinizing the same people that are contributing. लिहाजा end goal यही होगा कि the margins are going to deplete so much that this businessman will walk away to a country that has better opportunities, and the visa policy is an issue. हम जैसे लोग जब बाहर जाकर बिजनेस करने चाहते हैं, we don't have the visa support. UAE जैसा मुल्क
160 to 170 countries have visa-free arrival now, based on a Dubai passport. हमारे passport पे शायद आपको 20 countries में मिल जाएगी access visa on arrival, जिसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी से एक second visa ले रहे हैं. मेरा एक सवाल था कि पाकिस्तान foreign policy अपनी improve करके इस जैसे प्यारा मुल्क नहीं मिल सकता आपको, इस जैसे landscape आपको नहीं मिल सकता. अगर हमारे passport की वो worth होती, worth is based on visa-free arrival to countries, not who we are as a nation. अगर आपको मिल जाती तो हम पाकिस्तान का पासपोर्ट बेच सकते हैं. अगर टर्की सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है इन्वेस्टमेंट, तो क्या पाकिस्तान नहीं ऑफर कर सकता? We're doing some of the best real estate projects in Pakistan right now. In terms of value for money, 7% rental yield आपको ऑफर की जा रही है on any good apartment building in Islamabad. अगर घर लेंगे तो शायद 5% हो. तो ये अट्रैक्शन हम भी दे सकते हैं कि buy a property in Pakistan, उसके अगेंस्ट आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलेगा और पासपोर्ट पे आप 100 कंट्रीज पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल होगा. जो कैरिबियन कंट्रीज हैं which you're representing, St. Kitts, Grenada, and I think there's a number of others, St. Lucia, वो islands हैं जिनकी शायद 1 लाख की आबादी होगी, but they have visa on arrival for 140 countries. I mean, there's no comparison of Pakistan, what Pakistan has to offer. Our GDP is only about 300 billion, जो कि मजाक है. हमारा GDP इन हालात में, with our resources, with our capability, with our employment, should be well over 600 billion. Because अगर 800 Turkey का है, with their population of about 80 million, we are 230 million. Please मजाक किया जाए पाकिस्तान के साथ. So ladies and gentlemen, I don't want to take the whole forum and hijack this. My panelists have already said enough. We're all on the same page. We have faith in this country. ये मुल्क आगे जाएगा. Bankruptcy is out of the question. War is out of the question. I'll tell you one thing. Pakistan has nothing to lose in terms of going to war. So anybody that decides on questioning our sovereign element, they'll have a lot more to lose than us. So we're very much sure of Pakistan's stability, Pakistan's certainty in terms of future. And there's one thing I need all of you to remember. हमारे कायद के अल्फाज हैं, that's all you need to relate to. कायद ने ये कहा था, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि there's no power in the world that can undo Pakistan. So I guarantee you, we're all here and we look forward to a beautiful, prosperous future together. Thank you so much. Thank you, Yasser Saab, for your dynamic thoughts as always. And I'm so hopeful that everything that you say, and I've witnessed this at every platform. When you were at the Chamber of Commerce, on every platform that you've been, you've advocated Pakistan. And if half of it gets done, trust me, our problems are going to be gone, inshallah. Now I would like to welcome Mr. Waleed Mushtaq, CEO, Roots International Schools and Colleges, for his thoughts on the topic today, the path to prosperity and how to turn around Pakistan. Thank you, Usman. Thank you very much. I think it's a difficult space to fill in the shoes after Sardar Yasir's dynamic address and Madam Rahat Kunan's, challenges versus attainments and achievements from the government regulatory standpoint to our aspirations as a nation and what we're going through right now. Of course, so the reality is that these are turbulent times. So, हम लोग तालीमी सेक्टर में एजुकेशन बच्चों को जब entrepreneurship और उनको courses or lectures prepare करते हैं, industry, academia, collaborations करते हैं, तो of course we prepare them. I mean, 21st century education, which we are relentlessly working day and night, is to equip our youth, tens of thousands of them in Pakistan, to assimilate and to understand the challenges in real life and to relate them. So textbook education, learning, teaching and learning in today's world without adapting and without interconnecting the real dots of life. I mean, from the invention of Chat GPT, an artificial intelligence tool in the world, which I believe Elon Musk has stated in the World Government Summit in Dubai just 2 days ago, that this requires an emergency government interference and regulation. क्योंकि Chat GPT जो है वो काम कर देगा जो कि इंसानों को replace करने में इतनी rapid pace पे. I mean, the other day, 2 days ago, my students at university, they downloaded the app and they were showing me the answers which that artificial intelligence platform is speaking and conquering, how it can create disruption in real world. It is unbelievable. So my message to the youth of today, of course, adaptation, holistic review, challenging times demand a different strategy. Lekin, after COVID, in the last 5 years, the world has evolved. If you look around us, हम कहें कि आपने अगर idea को scale करना है through YouTube automation, through digital disruption, freelance marketing, freelancing, outreach, you can do the same sitting in Pakistan, Lahore, Karachi, Islamabad.
I mean, you know, this is a multi-billion and a trillion-dollar industry. I mean, if you go to Dubai, the brick and mortars of businesses and infrastructure and development, and you know, in the past 5 years, the largest spread of business in Pakistan is co-working space. And I know there are two of us leading groups out of Lahore and Punjab and Karachi who are leading the markets from Co-Labs to Daftar Khan, and you see all over these. So conventional brick and mortar infrastructure is being diverted. So that's the message कि आपने अपनी business strategy और अपनी aspiration को किस तरह adapt करना है. So reduce the cost, assimilate the holistic development. You know, of course, you have to bear in the regulation, challenging economic times, connect with the world, but less reliant on the capital infrastructure costs. So if you can socialize with skills, with digital learning, digital outreach, automation, artificial intelligence tool, data assimilation, data is the key. It's a multi-billion-dollar sector. So learn to leverage and build data platforms which could be used from Google Analytics and other platforms which can leverage your enterprises, your startup companies. It could be anything. Could be a real estate marketing company, could be a health pharmaceutical, telemedicine company, delivery application, restaurant, food delivery. I mean, these kind of businesses give you better and faster returns. I mean, I know as much as there may be a social media hype on a Canadian coffee chain in Lahore in which there were 1,000 people queued up, as opposed to there were delivery queues in the province of Sindh for wheat rationing. Look at the disparity. But on the contrary, so there was a debate going on social media as if क्या वो Canadian coffee chain क्या Canadian passports दे रही हैं. So I think वो madam जो second passport की company होगी, you would be able to answer that कि वो coffee chain थी, it was a coffee shop. So it's a disruption. हमारी population के demographics जो है वो from tea to yogurt. So you know you have to adapt tools. A process ये है कि so my message to the youth, don't look abroad. As my dear friend Yasir said, grass is always greener on the other side. Startup capital in Pakistan could be as much as 1 million to 5 million rupees to create a digital platform through which you can identify data, engage from across the board, across the threshold. The same company you create in Dubai and UAE, Middle East, would cost you 10 times more. You know, Sardar Yasir mentioned a couple of large conglomerate groups. Look at multinational banks. 50 Arab billion ke unke profits and declared earnings there, fertilizer companies, growth companies. I mean, there's an abundance amount of talent and potential. सिर्फ ये कि ज़ाहिर of course challenges 75 साल के challenges का मलबा जब हमारे सर पे पड़ा है और youth के ऊपर आके पड़ा, so it is difficult to answer all in one go. लेकिन हम तो we have burnt our boats abroad, came back, serving the nation, employing more, doing our bit and pieces to employ more people, women empowerment, women employment, opportunities. बर्तानिया की, मलेशिया की, बेलारूस की, सेंट्रल एशिया की यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान लेके आ रहे हैं और जहाँ डिवैल्यूएशन के साथ बच्चों को 1/3 कीमत और कॉस्ट के ऊपर वो तालीम पाकिस्तान में देंगे हमारी कंपनीज. हम इसी मुल्क के अंदर रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, सस्टेन करेंगे और आगे भी अगले 50 साल में भी करते रहेंगे. एंड वी विल डिसरप्ट. सो ऑल पोटेंशियल यूथ एंड एंटरप्रेन्योर्स, आप सब ने हाथ खड़े किए. मैं आई अंडरस्टैंड, यू नो, फेमिलराइज. आजकल फिजिकल जहाज में जाके दुबई, लंदन, पोर्चुगल, लिस्बन में बिजनेस करने के बजाय आप ऑनलाइन जाएं. डाटा इज द की. मैनेज योर सिस्टम एंड इकोसिस्टम ऑन अ डिजिटल, ऑन द palm of your hand, and collect data and assimilate. Go on YouTube automation, learn some videos on how you're able to reach out maybe. So what will make you a millionaire in life? My message to the youth: if your idea touches 1 million minds and hearts, it will make you a millionaire. If you really want to look at, you're looking at a millionaire in monetary terms. If your idea touches 10 people, of course, the same film, the return will be the same. So you first focus on a passionate idea which caters the need. All these large-scale disruptive companies from Ubers and Careems and the real estate marketing companies, online digitization, health pharmaceutical industry, or online law services, legal services, whatever we see. So it's all created out of it. So you need to learn to assimilate, improvise on your learning skills, and be able to adapt. And of course, the journey is not going to be easy. And mind you, there's nothing in life called as a shortcut. There will be multiple failures. You know, Colonel Sanders, it's famous about him, the founder of KFC's. So he was rejected with his recipe 200 times. 200 times his recipe was rejected, and 201st time he got it right. And that he got it right in the 1990s.
You can Google about it. It was not in the 70s or 60s. And hence you see KFCs all over the world as a multi-billion-dollar industry. Elon Musk also says, for entrepreneurs, and please, all the government officials, please don't penalize me for saying this. Elon Musk says that don't waste your time for regulation and government policy making. Focus on your bit. Regulatory mechanisms and policies will come through processes and systems which will evolve in your bit. Don't worry about that. My future entrepreneurs sitting in the hall and the youth, 70% of the youth bulge of the population, you're the future, you're the key. I wish you all the best. Thank you so much. Questions from the audience? Okay, we'd like to take one question from the audience, if someone would like to ask the participants. Sure. अस्सलाम वालेकुम जी, नईम पिराचा, CEO आर्काइव टेक्नोलॉजीज। मैं एक अवेयरनेस थोड़ी सी क्रिएट करने, मेरे लिए चैलेंज बड़ा बना हुआ है कि गुज़श्ता 10 साल से हम इस्लामाबाद में कोशिश कर रहे हैं, वी आर पायनियर्स इन रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और जो हमें चैलेंज फेस हो रहा है कि हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पा रहे। इन ट्रू सेंस इंटरनेशनली जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट होती है वो पाकिस्तान में उसका मिसकॉन्सेप्शन है कि पेपरलेस इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल, इसको समझा जाता है कि पेपर ख़त्म हो जाएगा, वेयर एज पेपर इंटरनेशनली सारी दुनिया में आउटसोर्स होता है और उसकी सॉफ्ट कॉपी इन हाउस आपको डिजिटाइज करके दी जाती है। इनफैक्ट डिजिटाइजेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट सिक्योरिंग द ओरिजिनल फाइल, क्योंकि जितना भी ऑडिट या लिटिगेशन है उसमें आपको ओरिजिनल कागज़ ही मांगा जाता है, और वो ओरिजिनल पेपर या ओरिजिनल फाइल्स जो हमारे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिस्टम है यहाँ पे बोरियों पेटियों में पड़ा होता है, और उसको आप जब सिर्फ तसल्ली होती है ज़हनी के पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन जब ढूंढने जाते हैं तो कई दिन लग जाते हैं या मिलता नहीं है, या उसको आग लग जाती है या लगाई जाती है, मैन मेड डिज़ास्टर या नेचुरल डिज़ास्टर से वो कंप्रोमाइज्ड होता है। तो हमारा पिछले 10 साल से वी आर इन इस्लामाबाद जो ये काम कर रहे हैं कि फ़िज़िकल रिकॉर्ड जिस तरह अमेरिका में रखा जाता है, आर्काइविंग जिस तरह प्रॉपरली की जाती है, वो बॉक्सेस में बार कोडिंग करके उसको और उसकी डिजिटाइज कॉपी, स्कैंड कॉपी हमारे क्लाइंट के पास होती है और ओरिजिनल कॉपी हमारे पास होती है। सो वी उसको सिक्योर करते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, तीनों चीज़ें हम मेंटेन करते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता था। मैंने एजाज साहब से रिक्वेस्ट की कि थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा ताकि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं। तो आर्काइव टेक्नोलॉजीज़ हमारी कंपनी का नाम है, और हम बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, NGOs हैं हमारे पास। तो इसको मैं चाह रहा था कि आपको ज़रा थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करूं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. And I think that is the end of our session today. Thank you to all the participants. Thank you once again, Mr. Irfan Wahab Khan Saab. Thank you, Adil Khatak Saab. Thank you, Mr. Waleed Mushtaq, Mr. Sardar Yasir Ilyas Khan, Tawseef Farooqi Saab, and Rahat Kunain Hassan, and of course, Ms. Sahar Tarad as well. Thank you so much. But please don't stay on the stage. I think we have some mementos to give away. There you go. Thank you, everybody. This was an amazing progressive session. You all were really good. Before we jump towards the speaker souvenir ceremony, I would like to invite the CEO of Second Passport, Ms. Sahar Tarar, to please present the souvenir to Mr. Meher, who is the CEO of Life Residencia. Can I please have the honor to invite Mr. Meher Sayal, who is the CEO of Life Residencia.
These are such beautiful moments to be cherished. A huge round of applause. Ladies and gentlemen, thank you. Huh. Yeah, yeah. Sarah, Okay. Mr. Yasser would just like to make a brief comment before we go ahead. Yasser just would like to make a brief comment. Pratisab, sorry we missed your name. Wanted to thank you and congratulate you at the same time for organizing this along with Ijaz and Sar. Sabhi behtrin initiative hai. I want to reply to my brother named Pratisab, who is a dear brother who has served with me as a board member in the Islamabad chamber. I had the coincidence of working with him. Main aapko ittifaq ki baat batau. We were talking about your business. Waleed Mushtaq Saab had no idea about it. So I think the issue is lack of awareness that this service is available in Pakistan. You're the only one that I know of. And मैं दोबारा clarify कर दूं सबको कि he is a true innovator. And this is one thing I missed in my address. There's two types of innovation we need to work on. One is incremental and the other is a breakthrough. Incremental is taking an existing idea and improving upon it and implementing it locally, which is what Naeem Saab has done. Pracha Saab, आपके सारे documentation, सारे records को लेके digitalize करके उनको store करते हैं. एक copy आपके पास होती है, एक copy उनके पास होती है. So it saves space and saves space. तो हम conservation की बात करते हैं, environment की बात करते हैं. This is fundamental. मैं खुद example देता हूँ कि जब मैं किसी government के इदारे में जाता हूँ, चाहे वो example हम ले लें नाजरा की ले लें या CDA की ले लें, RD की ले लें, paper work आज भी वहाँ पे कई हज़ार टन में पड़ा होगा. So Praja Sahab, this is the fundamental. I think governments need to endorse it. We as a private sector are with you. अभी Waleed साहब को पता चला है, he's saying यार मेरे पास तो tons में सामान पड़ा हुआ है, files, student papers, exams, 10 साल पुराने student का data पड़ा हुआ है, so he needs to digitize. And obviously there's many more like us. So I think we just need to connect with the relevant forum, and my counterpart हमारे चले गए Hassan साहब from EO में सारे हम जैसे CEOs ही हैं. So we'll just connect you with them. We'll make sure that this is spread, because it's not just a cause, but it's a great innovative idea which we think should be implemented across Pakistan. Absolutely, we're with you. Okay, now I'll Thank be you. requesting Bilal Sahab to come on stage to distribute the awards to our speaker. Bilal Anwar, please. Looking forward to receive you on stage. Bilal Anwar from NDRMF. So this conference is happening because of three people: Bilal, Sahar Tarar, and Waleed Malik. So give a big round of applause for all three of them. Waleed from Square 9. Yeah, okay. So please, Tausif. Biolab Usman Shaukat. Usman Shaukat. So Bilal will be presenting the souvenir and this beautiful frame to Usman Shaukat. So please, Bilal will be giving it to Sardar Yasin. Yasin, we loved your passion and the way you talked to the audience. You know, everybody was all ears to you. So please. Yes. So once Usman is done, so Yasin, you need to tell the people from where you are getting this energy to, na? Aha, okay. Yasin. Now the next is, afterwards I will be inviting Bilal, Waleed Malik on stage, and Waleed and Sahar both will be giving the award to Irfan Wahab. So Sahar Tarar and Waleed Malik from Square 9. Waleed, please come on stage. We'll be presenting the award to Irfan Wahab. Irfan Saab, most of our audience were demanding, is Irfan coming? Is Irfan coming? So thanks for coming over. And by the way, we missed you at World Economic Forum. We so wanted you there. Waleed Malik and Sahar will be presenting the next souvenir. Okay. Sahar, you please. Thank you, Bilal Saab. Now, Waleed and Sahar together will be presenting the souvenir to Rahat Kunain. Rahat Kunain. And by the way, Waleed Saab was very good when it comes to the discussion. He was really good. Waleed, you were really good. So sorry, Waleed. Now Sarah is getting angry. Waleed. I was talking to you. You were really good. Yeah, you spoke really well. Okay. So thank you, Sahar Tarar. Is Sahar giving Ijaz Saab? Please give the award to Sahar. Ijaz Saab. Sahar will be presenting this, please. Okay. Okay.
Rahat. Sahar, please. So I can see two empowered women here, one heading the Government Institute and one the second passport. So, wow, the stage is dominated by women now. And next, Sahar, stay there, please. We'll be presenting it to Adil Khatak, CEO, Atak Refinery. Thank you, Adil Saab. So, Ijaz Waleed will be on the other side. Okay. So, Sahar, please on stage. You need to face the camera. And the next is Waleed. Waleed Mushtaq. Please, big round of applause to Waleed for his energy. So thank you, Waleed. Yes. And I would request all the speakers to come forward for group photo. All speakers, Adil Sahab, Rahat. Oh, Tausif Farooqi, just hold on. Tausif Farooqi, just a second. Tausif Farooqi, Sahar will be presenting it to Tausif Sahab. And Waleed Malik as well. Aayega Waleed. Chale. In the picture, okay. Group photo, all of you together. Please come forward for the group photo. Thank you, Tausif. Thank you, Rahat. Thank you, Irfan Wahab. Thank you, Waleed. Thank you, Adil Khatak Saab. And a smile, please. Thank you so much. CEO Club is really grateful to all of you. All right, Ji, I'm moving towards the last session of the AirLink CEO Summit, Islamabad. But before we move towards the session, I would request everybody, all of you, including all the respectable guests on the stage, to please have your seats. All of you, ladies and gentlemen, I would like to request all of you to be seated so that we can move towards the closing ceremony of the event. All right. So let's talk about something which is the need of the hour. Pakistan's economic turnaround is the last session of this mega corporate event of the year. Ladies and gentlemen, to begin with this session, I would like to call the Chairman Oil
I really request all of you to be seated, please. All right. Can it, क्योंकि इतना रश सा हो गया है, इतना हुजूम सा हो गया है, that you guys really need to calm down and sit down. All right, Ji. I would like to call the Chairman, Oil and Gas Regulatory Authority, OGRA, Mr. Masroor Khan, to please come on the from Chairman, Oil and Gas Regulatory Authority. Thank you everybody for coming here. I would now like to call the President and CEO of Mobilink Microfinance Bank Limited, Mr. Ghazanfar Azam, to please come on the stage for the last session of this mega event. Mr. Ghazanfar Azam. Thank you, sir, for showing up on the stage. Now, yes, I've been asking all of you, all the respectable guests, to please be seated so that I may begin with the last session of this mega event. Ladies and gentlemen, now I would like to call the CEO of National Disaster Risk Management Fund, Mr. Bilal Anwar, to please come here for the last session. Sir Bilal Anwar, can I please have you on the stage? Thank you. Let's move on to the next. Thank you, Nazia. Let's move on to the next speaker of the day. I would like to call the CEO of the Millennium Education, Dr. Faisal Mushtaq, TI, to please come on the stage. Very good. ये तालियों की गूंज मुझे बहुत पसंद आई, and I think इस्लामाबाद का crowd जाग रहा है. Very good. Islamabad, you guys are great. और मैं चाहूँगी कि ये एनर्जी हम ऐसे ही बरकरार रखें और बाकी सब लोग अपनी नशिस्तों की तरफ रुजू करें. अच्छा जी, अब हम बुलाते हैं somebody who's the CEO and co-founder of Hum Network Limited, Mr. Durait Qureshi. Sir, can I please have you on the stage? Somebody who's the CEO and co-founder of Hum Network Limited, Mr. Durait Qureshi, on the stage. Assalamu alaikum, sir. Thank you for coming. आप लोगों की तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए, because this is the last session of the event. Now I would like to call somebody who's so well spoken, Mr. Waleed Malik, who's the CEO of Square 9 International. Sir, can I please have you on the stage? Mr. Waleed Malik, who's the CEO of Square 9 International. Now, after inviting all the guest speakers of this last session, I would like to call somebody who's a doctor and the group CEO of Takmil Square, Mr. Dr. Kamran Fazal, to please come on the stage. Dr. Kamran, are you here? Can I please have and invite Dr. Kamran Fazal to come on the stage? Thank you, everybody. And I'm sure ये जो last session है आज के event का, ये बहुत progressive होगा, because this is going to focus Pakistan's economic turnaround. Illusion was reality. I'll catch all of you in a bit. To please sit down. या आप हाल से थोड़ी देर बाहर चले जाएं अगर आपने नेटवर्किंग करनी है, लेकिन प्लीज़ आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टिंग ये अपना ज़रा साइलेंस में चले जाएं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन है. लोग यूजुअली समझते हैं कि लास्ट सेशन में लोग बोर होते हैं, हालांकि सबसे पावर सेशन होता ही है. ये मेरे हारिस, मेरे एक रिक्वेस्ट करना, सबको बैठा दें आप प्लीज़. साकिब प्लीज़ सिट डाउन, पीछे वाले लोग सारे बैठ जाएं. देन वी विल किक ऑफ द सेशन. नाजिया सबको कह दे प्लीज़ सेटल डाउन हो जाएं.
और कोई शोर नहीं होना चाहिए। ओवर टू डॉक्टर कामरान प्लीज़, माइक आपको दे रहे हैं। ये आपके साथ। Assalamu alaikum ji. My name is Dr. Kamran. I am the moderator for the last session. I am currently running a business in real estate industry. I'm a developer, and the project is called Takmil Square. We believe in my slogan of the company is real estate with purpose. But for now, I think my role primarily revolves around developing the opinion of all the market leaders in specific industries. And I'll start from Mansoor Khan Sahab, who is the Chairman Oil and Gas Regulatory Authority. So Mansoor Khan Sahab has an interesting background. He's been in the industry for many decades, and he's held various global positions. He was one of the key team player in Shell, and he has worked in difficult economies like Laos and Cambodia. When I was going through his profile, it is really interesting to see his perspective. Mansoor Khan Sahab, I would really appreciate if you could kindly tell us two answers to the questions. One is your industry-specific perspective towards Pakistan's current economy, and then of course the broader question would be what is happening in terms of illusion versus reality on the national level. Thank you. Is it better now? Okay. Thank you very much for inviting me. Yes, my name is Mansoor Khan. I am the chairman OGRA. Probably I have got the simplest job, which is to communicate the prices of petroleum products and natural gas and LNG to the 220 million people. और मेरी जब भी आवाज़ पहुंचती है नई कीमतों की, हर आदमी बहुत खुशी का इजहार करता है. But in reality, what happened is वो कहते हैं जी shoot the messenger. That's the reality. अब आपका सवाल कि जी पाकिस्तानी context में what's happening in the energy sector, specifically to oil and gas. We in OGRA are responsible for midstream and downstream activities only. We do not handle or regulate upstream, which means in simple words, when it comes to petroleum products, तो हम ये refining sector देखते हैं, और उसके अलावा जो marketing sector है वो देखते हैं, which includes ship to shore operations, terminal operations, transportation through pipeline, transportation through tank lorries, और उसके बाद जो मुल्क में 10-12 हज़ार पेट्रोल पंप्स हैं उनको हम लोग रेगुलेट करते हैं. When it comes to the gas sector, हम नेचुरल गैस सेक्टर को देखते हैं, दोनों सुई कंपनीज को देखते हैं, उनकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी के लिए जो है हम मुशावरत करते हैं. एंड देन वी हैव दिस न्यू सेगमेंट विच इज़ LNG विच केम इन 2015 ओनली. अब सवाल ये पैदा होता है जो आपने कहा कि जी चैलेंज क्या है. जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि द साइज ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ अराउंड $35 बिलियन US. और अगर आप देखें तो माँ सिवाय उस 3000 MMCFD गैस के जो कि हमारी ज़मीन में से निकलती है वाया 100+ वेल्स, और 60,000 बैरल की एक छोटी क्वांटिटी जो कि KPK से निकलती है, एवरीथिंग एल्स इज़ इम्पोर्टेड. पिछले 12 महीनों में हमने तकरीबन कोई $22 बिलियन US की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की, $5 बिलियन US की हमने LNG ली. LPG के नंबर आपको मालूम है, कुछ वॉल्यूम ईरान से आता है, कुछ वॉल्यूम पोर्ट कासिम से आता है, कुछ रिफाइनरी से आता है, कुछ वेल से आता है. सो द बिगेस्ट चैलेंज जो कि हमारे इस वतन अजीज़ को इस वक्त है वो ये है कि ये जो 30-35 बिलियन डॉलर की जो इम्पोर्ट और प्लस लोकल प्रीडोमिनेंटली इम्पोर्ट है, ये हम कैसे अफोर्ड करें. मैं आप लोगों से एक छोटी सी मिसाल शेयर करता हूँ. आज से 15 रोज़ कबल जब ओगरा ने तेल की कीमतों का ऐलान किया तो उस दिन जो हमने एक्सचेंज रेट लिया इट वाज 236. कल रात जब हमने पेट्रोलियम की कीमतों का ऐलान किया, जब हमारे तमाम लोग हमसे नाराज़ हुए होंगे जो इस कमरे में बैठे हैं, द नंबर वाज अराउंड 270. अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये वेरिएशन होगी और हमें वो मॉलिक्यूल्स ख़रीदने हैं तो वो हम कैसे ख़रीदेंगे. सो द इशू इज़ अफोर्डेबिलिटी. अब रही बात कि हमारी कॉम्पोजिशन है क्या. जो पेट्रोल है
वो सिर्फ हमारी जो 5 लोकल रिफाइनरीज हैं वो सिर्फ 26% बनाती हैं। जो रिमेनिंग 3-4 है वो सारा का सारा इंपोर्टेड। डीजल जो है वो 50% इंपोर्टेड है, 50% जो है वो लोकल रिफाइनरी से आता है। लेकिन वो जो 50% लोकल रिफाइनरी से आता है उसका फीड स्टॉक जो है वो 90% जो है वो इंपोर्टेड क्रूड है। अब से 15 दिन के बाद हमारे वतन अजीज़ में एग्री सीजन शुरू होने वाला है, जो कि साउथ से शुरू होगा और पंजाब की तरफ आएगा। हमें मार्च के महीने में 7.5 लाख टन डीजल चाहिए पाकिस्तान में तमाम सेक्टर्स को कवर करने के लिए, तो उसके लिए डॉलर्स चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त हम सब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो जाहिर है समझ में आ गया, हम तमाम लोग बाशऊर लोग हैं। सो व्हाट नीड्स टू बी चेंज। अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है और ये वो फोरम है कि जहाँ पर हमें ये बात करनी चाहिए कि अब हमारे पास द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन और द वे फॉरवर्ड इज़ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी। हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा। जब सूरज तुलू हो रहा है उसके साथ हम कारोबार शुरू करें, जब सूरज गुरूब हो रहा है उसके साथ हम अपनी दिन की एक्टिविटीज़ का अख्ताम करें। हम मोटरवे पे जा रहे हैं और 7 सीटर गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, ये हमारा वतन अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप गैस सेक्टर में देखें तो जिस तरीके से गैस का इस्तेमाल हो रहा है, जितने इनएफिशिएंट अप्लाइंसेस हमारे पास हैं, अभी पिछले दिनों एक स्टडी हुई उसमें पता चला कि पाकिस्तान में 58 लाख गीज़र्स हैं और वो 18.5% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये मामला कैसे आगे चलेगा। और अगर आपने उसके अंदर ये $15 और $16 वाली LNG अगर डाल दी तो ये कैसे होगा। दिस इज सिंपली नॉट सस्टेनेबल। तो हमें अपनी सोच में, हमें अपने एटीट्यूड में, हमें अपने बिहेवियर में जो है वो तब्दीली लानी होगी। ये तो मेरा जवाब है एनर्जी के हवाले से। लेकिन चूंकि आपने बात पाकिस्तान की तो, और बहुत सारी बातें जो मैंने की वो इतनी पॉजिटिव नहीं थी, तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि कल का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बेहतर है। ऐसा नहीं है कि कल खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो कि हम अपने नौजवानों को कहें कि नहीं जी हालात ठीक नहीं है। इकबाल ने कहा था पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। जिस देश में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, 5 दरिया जो है वो हर वक्त बहते रहते हों, फ्लो करते हों, साल में 30 लाख मैट्रिक टन जो है वो गंदम मुक्ति हो, अपना हमारा शुगर है, कॉटन है, हर चीज़ हमारे पास है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का साइज़ जो है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप पाकिस्तान के किसी भी बाज़ार में चले जाएं, वो जो भी मैंने आपको डॉलर रिलेटेड नंबर बताएं, कोई भी आपको वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर रिफ्लेक्ट, उसकी वजह वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? बिकॉज जो हमारी लोकल इकोनॉमी का जो साइज़ है इट्स ह्यूज। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो आज है उसमें थोड़ी सी टर्बुलेंस है, लेकिन जो हमारा कल है वो रोशन है। और हमें अपने नौजवानों को यही कहना चाहिए कि कल के लिए तैयारी करें, अपनी स्किल्स को बेहतर करें, कॉम्पिटेंसी बेहतर करें। और चूंकि मेरा ताल्लुक एनर्जी सेक्टर से है तो मैं सबको ये कहूँगा कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये महंगी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल ना करें इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। थैंक यू सर। Thank you very much, Mansoor Saab. Very well said. I think the solution in every industry right now is conserving your finances, conserving your energy, and this is what we need to take in for all the CEOs as well. The next speaker for the conference is Ghazanfar Azam Saab. Is the CEO of Mobilink Microfinance. He is running a sizable team. He has worked in multi-facets and he's also worked for a lot of industries. Isme Kashyap Foundation is also one of the organization. And with huge team of 1,500 people, I would ask him the same question. Ghazanfar Saab, I think the biggest problem in the country right now is of the lower strata of income and people who are neglected all across the Pakistan. Your organization is specifically trying to find solutions for them. What is your current strategy for helping these people, and also how your organization is going to help Pakistan's economy? Thank you. अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो सवाल है इसका पहला जवाब तो ये है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड, कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस।
dilemma that we are facing today as a nation needs to be addressed by all of us, and also the root cause of it is the governance in this country. So if we are talking about problems in oil and gas, the pricing of it, the affordability of it, the problem of less than where the education level should be, the problem of less access to finance than where it should be. The root cause is just one, and that is governance. So I will restrict myself to my area. I think Waleed Mushtaq Sahab will address education much better when his turn comes. So in access to finance is one of the fundamental issues that can either ensure balanced growth or otherwise. And also access to finance helps people in becoming self-employed. We know that government cannot offer all the jobs, and then it's not a business of the government to provide jobs. Business and industry can also flourish if they have easy access to finance. And state of access to finance in Pakistan, unfortunately, has never been very exciting. 10 years ago, when we started our current business, which is Mobilink Microfinance Bank, this was primarily established to leapfrog access to finance from less than 12% to maximum population that we can cover. And brick and mortar banking in Pakistan could only serve 12% of the population when we started in 2012. There were about 3.5 million bank borrowers in an adult population of 100+ million at that point in time, which has further grown. And what has happened in the last 10 years is that we have added about another 8 million borrowers in the micro sector. So still access to finance, if you want to start a business, no matter how small, is not more than 10-11%. 90% people still do not have access to finance if they have a good business idea, no matter, again, how modest it is. So what's the reason? Because if you look at banking business model in Pakistan, the banks raise deposits from bulk of the population, from the retail banking networks, and most of the money, 60 to 70%, lands in government paper, which is T-bills and investment bonds. So what happens is that there is very little left for rest of the businesses, private sector. And next major chunk goes to the large corporates, big ones. And when it comes to the retail markets and SME markets, you will be surprised to know that SME market size is around 7 to 8 trillion rupees in Pakistan. And only 5% of the SME businesses are able to access finance from banks. The rest 95% have to depend on their own savings, or family or friends. And they cannot grow their businesses to an extent which they should over a period of time because financial support is not available. The same was situation in microfinance when microfinance banks started about 20 years ago. As of today, about 40% of microfinance market is addressed. Talking about numbers, out of a population of, as I said, adult population of 130 million or so, minus plus, we did have bank accounts on the savings side of about 50 million people, and bank borrowers are about 3.5 million. And in microfinance sector, we have been able to provide additional 8 million people with small loans. Now, if you look at again, what we need to do is we need to reach out to about 100 million people with financial products and services that, and that is not possible through the traditional brick and mortar banking. So what we are trying to do is now developing digital savings and lending products, which actually the telecom connectivity had made it possible to reach out to them. So in the last 4 or 5 years, we have reached out to about 40 million savers and about 4 million
borrowers through digital technology. And digital technology's beauty is that you can save, transfer money, or pay your bills, or borrow small loans just on a click of a button. It's real time. There's no paperwork involved, and there is no turnaround time, concept of turnaround time. So I believe these digital railroads will enable us to actually fill the gap, which has been there for 75 years, which nobody has been able to address. And, but there is a ray of hope now that in the next 5 to 10 years, at least in financial services, this huge gap will be bridged to some extent. I have another question, sir. Following up the same conversation, what do you have any thought on the current situation? How can microfinance industry, because this is what you're proposing right now is actually a long-term plan. So Pakistan needs surgical decision making, at least from every single industry. So is there any way that microfinance industry can facilitate in the economic crisis? Is there any possible short-term solution for it? Yeah, no, it does. It does. And even though being a very small microfinance banks compared to a commercial bank, we have as of today 265,000 individual borrowers who on average borrow about 260,000 rupees. This includes farmers and also low-income entrepreneurs in urban areas. Now, I think the youth of our country, particularly coming from the lower income segments, need to change their thinking that they cannot get government jobs, they cannot get, corporate sector jobs, because unfortunately the current environment is not conducive for industrial growth also. So what they need to do is, what does our community need in terms of basic services? It's food, it's healthcare, it's transportation and other services. So what they can do is probably to learn some of the stuff. Somebody can maybe get a commercial vehicle and start transportation business. Somebody can maybe start a food stall or something. Someone else can get into the garments business, because these are the basic things that everybody needs. These businesses which are related to providing food, healthcare, transportation, no matter how bad economy is, people still need these services. And the younger people need to now focus on where the real needs of the people are and develop or learn or enable themselves to actually start small businesses, small enterprises, come to us, come to other microfinance banks, come to regular banks also with their business ideas. Somebody was talking about business ideas. Have a good business idea, again, no matter how small it is, no matter how, if it starts from just a khoka or something, and then grow it, learn the business on the way, and then grow your business over a period of time. So jobs, unfortunately, are not easy to come by. And another area which I think is already picking up, and we need to encourage people and we need to provide them with opportunities, is freelancing. That while being in Pakistan now, you can serve the global audience, global clientele. And if you have received IT, education in IT, or developed some other capabilities that enable you to serve some foreign markets, so again, the IT connectivity now and internet enables you to actually sell your services abroad. And the youth of the country need not to necessarily migrate and go to some other country now. They can be sitting home and actually serving the global economy and then making a livelihood for themselves. Ghazanfar Sahab, thank you so much. I think it's very pertinent to say here, बहुत पुराना लोग ये जुमला बोलते थे कि ये वक्त वो है जिसमें सबको चाहिए सबसे पहले अपना पाकिस्तान. सो आई पर्सनली बिलीव जो गजनफर साहब की थॉट है उसको अगर हम कंटिन्यू करें, हर इंडिविजुअल को अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देना है, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम यूथ. एंड दिस इज़ माई I think the biggest dream that I have in this country is to see young people starting small things on their own, not looking for jobs. We do not need graduates, a massive amount of graduates from government colleges. We need vocational institutions to produce technically skilled people who can earn for themselves. So carrying on,
I would actually go to the next speaker, who is Mr. Bilal Anwar, CEO, National Disaster Risk Management Fund. And Mr. Bilal Anwar has actually held certain positions in UN. He has huge exposure on the climate change. And I would like to take his opinion, considering I was actually speaking to Bilal a while ago, and something really interesting came up. One of the major contributor of the economic crisis in the last year has been the flood that has happened all across Pakistan. And his role actually is very critical to prevent initiatives or disasters like these. And he can be very instrumental towards helping Pakistan in avoiding these sort of situations. Thank you, Mr. Bilal. Yeah, thank you very much. Thank you, and thank you to Jasa for inviting and giving us this opportunity. Just a small comment on the title of this particular session. Illusion versus reality in most of the cases, and many of the cases actually, it's a matter of perspective. Many things which we enjoy today and which are the realities of life, they were pretty much illusionary not too far ago. So I think, but when we apply this in the context of Pakistan and some of the challenges which the country is facing, I think many small things and many kind of minuscule kind of challenges which other countries have overcome many years ago, a long time ago, they have really become a big challenge, a gigantic challenge for us. And when I look into this in a specific context of the institution which I represent, National Disaster Risk Management Fund, and then contextualize it with the climatic challenges and the disaster challenges which the country is facing, I think again this is a big challenge. This is a huge challenge which Pakistan is facing. I think in the specific context, what you asked. The very flood which we haven't really yet crossed over, with still many people in the Sindh and Balochistan area. I think that they still are going through the very initial phases of their rehabilitation and the reconstruction phases. And the government and many other agencies, both local as well as international, they are providing all the support. No, I think we need to take a step back, and I think many people or all of you must have heard that this specific flood is the direct consequence of the climatic changes which are happening not only in Pakistan, but they are happening globally, and we are at the tail end of it. We are where we are facing the consequences of these changes. I think that's very much true, and there is of course no denial to the fact that the climate change is indeed a global phenomena, and the contributions which Pakistan is making are indeed very small. But I think nevertheless the issue remains that here on the ground, the people who are facing the poor people who have lost their properties and the homes in Balochistan or in Sindh area, or their land for agriculture purposes, or the small businesses, I think we just cannot blame the global community for that. We have to do something about it. Now, when we talk about climate change, it is really, and especially talking about the behavioral changes, it is really everything. You know, few of us who are sitting here on this stage and coming from many different sectors, I think they all represent, when it comes to addressing, when it comes to trying to find a solution to these disaster challenges which are direct consequences of climatic changes. Energy is one thing. Finance, of course, is an overarching thing. Real estate development is another one, and similarly others. So what it requires, one of the earlier colleagues here on this stage actually mentioned that very rightfully and very powerfully, she mentioned that these are the small changes which actually add up, which accumulate, and they really make turn into big changes. So these are the small incremental kind of a behavioral changes which we need. What we need is the way we live, the way we commute, the way we entertain, the way we cool and warm our houses, and everything else. I think this is what is required. Now, NDRMF is a federal entity. I think one of my colleagues is going to play a short video at the background of it.
you can see that the kind of contributions which NDRMF has been able to do. But I think, you know, the one question which might be popping while go through the video and listening my candid talk is that, yeah, if all these contributions has been done, is that if these interventions were undertaken, then why we are still at the mercy of these disasters? It's because we're talking about the climate changes, we're talking about the natural induced disasters, and I think we're talking about a very long-term phenomena. It's going to take a long period of time to overcome these changes, and that can only happen with very conscious efforts. So there's a need for making the right kind of policies, and those policies needed to be fully implemented as well. I can give you one example, and this has actually happened in Pakistan because of the kind of reactive approach we have to different kind of situations and eventualities. When 2005 earthquake came, and all the measures and everything, the kind of institutional development and policy development which happened post 2005 was actually very largely focused on the earthquake. Now, forgetting about that, the country is vulnerable and exposed to many other kind of disasters as well. And similarly, 2010 floods, a very similar kind of approach happened in post-flood area. I think what is needed is a very comprehensive approach in terms of putting the right kind of policies and implementing those. Now, nevertheless, NDMA is another sister agency which is responsible for all the relief, rehabilitation, preparedness kind of efforts. Our role is very specific and focused, which is for long-term disaster risk reductions. So the kind of interventions which NDRMF made, they are focused and they are mandated to have the long-term intervention. So we do kind of, we build flood protection measures, we do the bunds and early warning systems which actually can pre-warn people and allow them to take the necessary precautionary measures. And then on top of that, the climate change adaptation and mitigation, and which of course we have several interventions. We got several projects lined up to do that as well. When it comes to the impact, of course, we're not going to see the impact, especially the climate change mitigation adaptation measures which we are doing. We're not going to see the impact in the next monsoon or the next year or even the year after. We're going to see the impact maybe 5 years or 10 years or 15 or 20 years down the road. But some of the flood protection measures which we have done, and I'm glad to say that those measures actually withstood the recent floods. So we are going to undertake some kind of assessment to see that how it positively or how it was able to save and safeguard the communities. But the initial assessment and the reports basically show that those measures have actually saved those communities. I think Pakistan, we're talking about the transforming Pakistan, reshaping Pakistan. I think what is required is a sustainable Pakistan. The sustainability component need to be brought in, need to be very tightly adhered to. So if we have missed coming up with the right kind of building codes after the 2005 earthquake or 2010 flood, I think this might be another opportunity, a kind of a painful opportunity to have those rights and properly designed building codes, and then have a regulatory and implementation mechanism to make sure that those building codes are ensured. Similarly, a friend from Ogra actually very rightfully mentioned that we just cannot continue with the kind of lifestyle which we, for energy consumption aspects. I think similarly on many other areas as well, we need to do very transformative and drastic changes as well. And that's the only way to move forward, and maybe that's the only way for Pakistan to have a sustainable future. Thank you very much. Thank you, Bilal. Bilal, I would like to ask another question here. What is your take on the law and order situation, or at least the application of laws in terms of taking the precautions, especially in the northern areas? When the flood came, there were massive shoulder expansion of the rivers, which was
On the real estate side, there were hotels, there were property expansions. What is your take on that? Have you taken some initiatives towards saving those initiatives? And how is government moving towards that? Because these are the things that we can actually clearly avoid. And it has brought down, it has brought in a lot of disaster in those areas. You're absolutely correct. I think that's again one of the kind of painful examples that some of the structures which were built on those areas and some of the development which had been done in those areas that has been actually clearly disastrous for those areas, for the communities, and of course the local ecosystem as well. So I think there is a need for this kind of a paradigm shift, a mindset shift in terms of the development. What largely has been considered and conceived is that the development is all about construction. It's all about clearing the natural systems or overcoming the natural systems. Whereas this kind of approach has become redundant in many areas of the world. So I think moving forward, I mean, we know that the damage has been done, and we have seen the pictures and we've seen the videos when many of those structures actually collapsing because of the upsurge of the rivers. I think a rich lesson should be learned from those, and but I think the regulatory mechanism should come into play as well. The business world actually is driven by profit. Those areas have a much better accessibility now, so there is a tourism pressure. So, I mean, no one is denying to the fact that they need hotels, they need buildings, and they need roads. But I think that it can be constructed in a very different way that is not really harnessing the nature, but it is aligned with the nature. And then we have the basic information in terms of the zoning and the hydrology of the rivers. I mean, that fundamental information is there. It's all a matter of designing those structures in compliance with this information and then complying with those requirements. I think this is the only way forward. Thank you, Bilal sir. Much appreciated. Our next speaker is Mr. Faisal Mushtaq. It's really interesting to find on his profile, he is one of the most influential 500 Muslims across the globe for the last 3 years. And he's running an institution called Roots Millennium. He is also on the YPO board, and the best part about him is that I've found is he's actually bringing about change. We are all, you see, all the businesses are about profits. And after a certain point, we all start looking backwards and start seeing what we're contributing towards our country and our people. So Faisal has actually brought about his part of the share through an organization called Change. And Faisal, I would like to take 2 questions from you. Question number 1 is, what is your industry-specific view on the current scenario? How can you contribute, and your organization primarily, and of course the education system can contribute towards this current scenario? And what is your national level policy making view on the economic crisis? These are the 2 questions I want to take. Thank you. Thank you very much. And Mariam and Essen, there are lots of chaperons, young people around. You can ask them to come and sit. We have been waiting all day, so I need to build my own audience. So there's a lot of young people outside. They're chaperoning. You can ask them to sit. Thank you very much. Look, there are 3 things. And people talk about people. Some people talk about the planet. Some people talk about the profits. And since morning, because it is an executives forum and it's a corporate forum, we are talking a lot about profits. We're talking a lot about corporate governance. We're talking a lot about sustainability. We just heard. Let me talk about people. And you know, they say that capital market is the real denominator for financially inclusive modeling. I say, what good is a capital market in absence of human capital? People say that private equity is something that we need to trade off and to build and to create businesses. I say, what good is private equity in absence of gender equity? People say that digital inclusivity is the game for digital transformation. But I say, first we need social inclusivity before we need to talk about the digital inclusivity. So I would like to talk about the social contract between the citizen and the society.
75 years is a very young age. It's usually the age of our parents. This country is work in progress. And for you to understand, you can never have equity, what to talk about growth, sustainability, and an impact on GDP, unless and until you emphasize on the people. Second largest out of school children population, 220 million, 2.5 crore bachcha, schoolon se bahar after Nigeria. Everyone talks about corporate governance, policy, institutions, democracy. How can you have democracy and institutional functioning when 220 million, 22 crore log, when they are born in Pakistan, they are born as subjects, not as citizens. When people are born, they're not born as citizens, they're born as subjects. Education, literacy, social contract transforms subjects into citizenry. So the first thing that we need more strategic in our country is our investment in literacy and a grassroots investment across the provinces and the public sector. With the current polarization and disparity in education, look at, we have been able to do so much in Pakistan. Just imagine कि पाकिस्तान का हर गली मोहल्ले का बच्चा जब स्कूल्स जाएगा, हर मदरसे का बच्चा जब इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस को पढ़ेगा, हर पब्लिक स्कूल के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज खत्म होंगी, तो यू रियली डू नॉट नीड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम. ये जो इकोसिस्टम की बातें करते हैं, लेट मी टेल देम, in our country we have an ego system, not an ecosystem. If you want to transform the ego system into an ecosystem, just invest in the social dynamics of literacy, poverty alleviation, microfinance, social and human capital. So nothing is more strategic. Your strategic weapons are not strategic than the people of the country if you want active, inclusive and an equitable citizenry. आगे चलती है कि ये बात करते हैं हम लोग, सिखाया जाता है slow and steady wins the race. Slow and steady does not win the race. It is the fast and consistent who wins the race. हमारे टीचर्स कहते थे, बेटा money does not grow on trees. वो टीचर्स गलत कहते हैं अब. Money does grow on trees. The more trees you plant, the more carbon credits you get. Game बहुत बदल चुकी है पाकिस्तान में. People must realize that these institutions called schools. Now when I talk about school, I don't talk about the private sector. I talk about the state, government, madrasa, community, development, donor. When we talk about schools, they contribute to knowledge society. And when you talk about universities, they contribute to knowledge economy. So next question जो आपका था कि policy level पे क्या करना चाहिए? भाई policy level पे it is a story about 3 people. I have always been on the other side. When I had an opportunity to be in an interim setup, and I always said to the government that look, it's a story about 3 people, skill, will and bill. The government needs to have the bill. They need to have a larger contribution of GDP to education. They need the skilled people, right people for the right jobs. Education is no more a federating subject. After the 18th Amendment, it is a provincial subject. So the real investment needs to go into provinces, building capacity of the district education communities and the schools that we serve. And the most important thing is the government needs the political will. That do they really want to invest? Now we keep hearing over the last 75 years कि हमारी stock market ये है, industry ये है, media ये है, society ये है. आपके सारे मसलों का हल, may that be terrorism, may that be economic inclusion, may that be equity, may that be disparity, and may that be economic dependence or interdependence. It comes through basic concept of literacy. आप बारी बारी कहते हैं कि भाई बांग्लादेश आगे निकल गया, they invested in literacy. आप कहते हैं हिंदुस्तान is today placing orders of 500 planes, 250 each from Boeing and Airbus. They have invested in school level literacy. So जब तक आप एक basic fundamental issue को policy and perspective में address नहीं करेंगे, how can you have economic and GDP contribution in absence of your citizens being disenfranchised in a simple concept of citizenship? तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को देखना चाहिए. बाकी मैं आपको ये बताता चलूं कि the only thing which will remain certain, boys and girls, listen. Boys and girls, listen. The only thing that shall remain certain, it is called uncertainty. The only constant
that will remain in the world. It will be called the constant of change. So embrace yourself for the future. This taboo and this narrative that governments will come and they will create jobs, it's absolutely a myth. It's not a reality. State has no money. They cannot create jobs. You, the private sector, the young people and the youth of Pakistan, which is 63% under 30, you will create jobs. So the definition of the chief CEO should not be chief executive officer. Gone are the days of executive marriages and executive corporate leaders. CEOs are called the chief energy officers, and they should come up with those sustainable and inclusive and actable ideas to be able to inspire change. तो बात आपका मसला हल तब होगा जब आप रियलाइज करेंगे that we need to unlearn and relearn, और बच्चों को आपने ये बताना है कि नौकरी 1 लाख रुपए की नहीं लेनी, 1 लाख लोगों को नौकरियां या 100 लोगों को नौकरियां क्रिएट करनी है. In my education system, I tell them, beta, I'm not preparing you for 100,000 rupees a month. I want you to create 100 jobs a month. तो पहले बच्चों को रिस्क टेकिंग सिखाएं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्क हैज द रिवॉर्ड्स, और उर्दू में कहता हूं कि रिस्क में रिस्क है. और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की अभी तो पार्टी शुरू हुई है. नाजुक दौर से अभी तो गुजर रहा था, गुजरा है, गुजरेगा. We are not going to run away. We are going to take active participation and initiative. People, those who will come and be part of the Pakistan's future, you will be the real dividend for the future. So, और ये जो लोग बाहर statistics है जी, लोग बाहर जा रहे हैं, 8 लाख पाकिस्तानी चले गए हैं. नॉर्मल हालात में भी 5 लाख गए थे. और जो जा रहे हैं, घबराए मत. You can take a Pakistani out of Pakistan. You can take a Pakistani out of Pakistan. You can never take that Pakistan out of the Pakistani. तड़प तड़प के वो वापस आता है. क्यानी साहब बैठे हुए हैं, कनाडा से वापस आए हैं. कोई पाकिस्तानी नहीं है जो तड़प के वापस पाकिस्तान ना आए. So I am an optimist. I trade in hope and with young people. और मैं आपके फोरम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी स्ट्रेटेजिक बातें ना किया करें. Talk to the heart. When your heart is at the right place, your head will follow. Use your hands and consider Pakistan as your home country. Thank you. I have done this second session with Faisal. First one was in Lahore. So he speaks from the heart, and his opinion somehow, beats the apparent logic also. So thank you so much, Faisal. You actually bring about the energy in all the audience, and especially in the youth. And we need leaders like you to come up frequently so that people can have icons in front of them. Our next speaker is a family of legacy. I was just reading about his mother, Sultana Siddiqui, and I was shocked to see that Madam Sultana had started her journey 50 years ago in the media industry. The first production she had was in 1973 on PTV. So basically, with this contribution, Duraid has actually come forward and taken the leap as a young CEO. He's leading the group called Hum Network, and with 4 network channels, Duraid has his own journey. Duraid, I would like to ask you, I think your answer is probably the most critical conversation that we need to have, because we are living in an era of misinformation. And every day we open the channels, there is only stress in front of us. And how your organization is going to help us understand what's happening on the media, and how is media going to help this country come out of this wrong opinion making, and how can we see the optimism coming in front of us? Thank you, Duraid. First of all, I would say that I'm not going to give you much hope like Faisal did. He's a dear friend, spoke from the heart, but we have to face the realities. Being in media gives me a lot of access to go meet bureaucrats, ministers, and institutional senior journals at different levels. And I'm shocked and saddened when I visited the ministries in the last couple of weeks.
I wanted to seek hope, what is going on, how they are looking at solving Pakistan's problem, that we are under so much stress. People are talking about dollars will come from UAE. People are talking about they will come from Saudi Arabia, IMF. US is saying we are going to help the economy. But what matters is all this money that is coming in is a loan, right? How are we going to pay this loan? What is the solution on that? Right? I mean, we may get another $10 billion that will be spent. So I started, I graduated in 97, I joined my mother in 2000, and I told her that we will launch a TV channel. We started one TV channel, then up till now I have launched about 9 TV channels. I've closed about 3 of them. We are running right now about 6 channels. We've just recently acquired 10 Sports, Pakistan Beam also. So I told her we'd launch a TV channel. And at that point in time, it was there were no private channels, you know. Parvez Musharraf had just announced 1999 a policy that we will allow private TV channels. Now, when I look at the problem is our inefficiencies and losses are more than the revenues. So when your revenues are less and your cost is more, you will always keep on draining. And no matter how much aid, grant, loans you will have, you will end up with the same problem which we have been ending up with. So I asked my research team to give me some data, which some I had from the ministries, and I'll share those with you. Today, Hum TV has approximately 750 employees, and we run 6 channels, and we have offices in UK, Middle East, and USA. PTV, which does not have international offices, does not have any effective channel which people watch, has more than or almost 5,000 employees today. Their revenues are 3 times lower than Hum TV's advertising revenues. 3 times less. And when I looked at PTV, then I went to Pakistan Broadcasting Corporation's numbers, and I was told every year 4.5 billion rupees are given to Pakistan Broadcasting Corporation, which does the Pakistan radio. I don't know who listens to Pakistan radio or anything else. And likewise, when I looked all around, these state-owned enterprises, which are called SOEs, they are a burden on the federal budget. 525 billion rupees that they get. They make another additional loss of 200 billion rupees. That is 700 billion rupees. Just the 3 corporations, Pakistan Railway, PIA, and Pakistan Steel, contributes to 2% of our budget. So if we were to sell all of these companies for just 1 rupee, the government will annually save more than 700 billion rupees. The discos, which are the distributing companies, they lose the energy loss, line losses which they call, or choriyan jo bhi kundo ke saath hai, 1.2 trillion rupees. The gas is another loss of another 1.2 trillion rupees. So if we were to privatize these things for just mere rupee or whatever money, any good businessman comes, take over their company and start afresh. We have already done this example in the 90s when we privatized the banks. And today, if you look at any bank that you see, UBL, Allied, MCB, Habib Bank, and many others that they came afterwards,
everybody is making a profit. They also had unions, and these companies like Pakistan Broadcasting Corporation, PTV, Pakistan Steel, Pakistan Railway, PIA, and there are approximately, if I'm not mistaken, 204 state-owned enterprises that I've talked about. If we sell those, I think first problem of reducing our budget deficit by 700 billion. The three companies that I talked about, which are 2% of our GDP, I think if we just throw those away and give it for peanuts to any businessman to run it, not only will they run it efficiently, make profits, add value to the GDP, but that 2% that you save, put it back to education. With just mere 1% of the budget going to education, how can we really expect to grow? And that, I think, what Faisal and all of us feel here, that we have to put in. And this money is a long-term solution. The short-term solution is take this money and put it in education. But let's come to some other things. When I talked about there is 1:7 efficiency ratio of people working. So for example, I have 700 people and PTV has 5,000 people. The government organizations, the government of Pakistan, and I'm not talking about state-owned enterprises now, the federal government that I'm talking about, they have approximately 1 million employees. Do you think we need 1 million employees? I think this can easily, within a year, if we really want to come and cut it down to about 50% in the first year, where most people are political appointees, right? And a department, a secretary will have number of naib qasids and so many T-boys and other things. So 1/10 can be reduced. And people talk about that it will create unemployment. I think it will not create unemployment, but it will create a faster economy for two reasons. Whenever people are unemployed, they want to work on some new idea to make more money because they cannot survive otherwise. And human beings are very resilient. So this 1 million people can also be cut down, and once we do cut our costs and work on our revenues as well. So concentrate on giving privatization, which will increase the GDP and reduce our budget deficit. So these are a couple of things that I think can be immediately done. Already on the cards, I know for various governments, even in the previous government, I know, even in this government, 44 units are already in the privatization. So my point is only that improve on the regulatory side. Your government should look at regulatory framework. And on the revenue side, as somebody, I don't know how many people know this, after textile, technology sector is the second largest exporter and gets the dollars for Pakistan. Right now, I think the number is somewhere close to 300 billion. However, this is not 300 billion, it should be approximately 1 trillion, because majority of the money these technology companies are making, they keep it abroad by keeping another company. So they keep the profits there and bring only this 300 billion, which is just the salaries and administrative cost. Why do they not bring it to Pakistan? Because as soon as this dollar comes, they convert it back to the rupee. Second, once and when they want to take this money which they have earned from abroad, they want to take it out, they can't take it out. So it's I think
critical. If today, if we fix our IT policy, the immediate fastest growth for our dollars is these IT, our young people, and and a small company from one people. My brother started an IT company just in last year. He has now more than almost close to 100 employees in just 1 year. His target is to have 5,000 employees in 5 years. And he thinks it can be easily done. What has happened is India has become more expensive because the labor has become more expensive. We are cheaper in the region, number one, and we have people access availability of these young IT people, and they don't have to do extraordinary jobs. The jobs are back office accounting, which is just punching and data entry jobs, but they do generate a lot of money. So a lot of things that are available. One is the IT that you can immediately invest on, and you don't have to invest any money. The best part is you do not have to import things. If we want to build a hotel, for example, it will take us 2 years to build a hotel and develop a hotel, and 3 years. In this, you just have to fix the policies and the money will start flowing in. Cut down your cost, increase your revenues on IT, and I think Pakistan is right on track. It is no different that, and then invest in education, as we said. On the petroleum, there are many opportunities, but why should OGDCL be not privatized? Why should WABDA be not privatized? Why do state-owned enterprises be making huge losses and are not privatized? I don't understand. Unless and until we do not do this, I'm sorry, no matter how many billions come in, no matter how much hard work we put in, it will be drained by these holes that are created in the economy. Thank you very much. Thank you, Dhurid. I think a very insightful data and a very important conversation. This is the sort of surgical decision making that this country needs to move towards actual Naya Pakistan. Because जो पूरी conversation का मुझे अभी तक समझ आया है वो ये है that no leader, no single CEO of any organization has any solution but to go towards conservation. May it be the conservation of energy, may it be the conservation of finances, may it be the conservation of human resources. So collectively speaking, government needs to get rid of these behemoths that we're feeding every year, and they're actually taking away the rightful finances that have to put forth towards the growth of the country. And having said that, I will get to the last speaker of today, Mr. Waleed Malik, CEO of Square 9 International. Mr. Waleed Malik is a real estate developer from Al Miraj Group. He has multiple projects across Islamabad, young entrepreneur, and I see a lot of hope in entrepreneurs like Waleed who will bring about the change of vertical growth. I will pass it on to Waleed to take his opinion on the current scenario on real estate. How can real estate contribute towards the economy of the country? Also, how can this current scenario be resolved collectively? Thank you. Thank you very much. First of all, I would like to thank Ms. Nazia and Ijaz Saab and CEO Club, all management who organized this event, and बड़ा successful आपने event organize किया. This is my last speech over here, and first of all, एक बात मैं आपको बता दूं. शुरू में जब नाजिया से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा कि आपने स्पीच एक तो उर्दू में करनी है क्योंकि आपकी लास्ट स्पीच होगी. मैंने कहा कि फाइन, आई विल डू माय स्पीच इन उर्दू.
जब आई एम लिसनिंग टू एवरीवन एट द एंड लास्ट में मेरी स्पीच है, तो द स्पीच विच आई प्रिपेयर, तो वो अभी मैंने टोटली अपनी चेंज की यहाँ बैठे बैठे। उसकी वजह ये है कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कवर अप हो गई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इकनॉमिक पोजीशन, जो हमारे मुल्क की हालात अभी जा रहे हैं वो कवर हो गया। फैसल मुश्ताक साहब ने अभी जो बात की, माशाल्लाह वेरी गुड स्पीच, जिसमें हमारे यंग एंटरप्रेन्योर, हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए बड़े एक मोटिवेशनल हैं आप। एंड डिज़ास्टर एज वेल, जो हमारी कंट्री की अभी जो पोजीशन है। स्क्वायर 9 का थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि वी गॉट राउंड अबाउट 7 to 8 प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्रीज़ में। मेनली हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इट्स इन पिंडी इस्लामाबाद। वी गॉट बेस्ट वेस्टर्न होटल जो कि बेरिया टाउन फेज़ 4 में बन रहा है, एंड वी रमादा होटल, एंड वी हैव मोर फ्रेंचाइज वी कैन होल्ड, वी आर होल्डिंग PF Chang's and different upcoming international brand we are bringing in Pakistan. And around we have 600 plus permanent employees in our company. ये सारा ये मैं थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो यंग लोग हैं वो प्लीज़ मुझे सुने। उन लोगों के लिए मैं एक मिसाल हूँ, जो कि मैं स्टार्ट किया था अपना करियर। आई हैव स्टार्टेड माई करियर इन 2018 दिसंबर। 2018 से लेके अब तक का जितना भी मेरा टाइम है 2023 में, दैट वाज माई स्ट्रगल टाइम। On that time, I have faced a lot of problems, difficulties. I have started, and then in 2019, and we faced COVID. COVID का initial time start हो गया. Still, we never gave up. हम उस obstacles को, उन problems को face करते करते आज इस position पे हैं कि we have around 16 plus offices in Pindi, Islamabad, UAE, Lahore, and Karachi, and we have 600 plus permanent employees. Those are working over here. The main thing which जो मेरा एम, मेरा मिशन और मेरा विजन क्या था, मेरा एम, मिशन, विजन बस दो चीज़ों पे था। जितने भी हमारी कंपनी के लोग हैं, मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूँ कि यहाँ पे जॉब अपनी सिक्योर करने मत आएँ, यहाँ पे जॉब की सर्च में कभी मत आएँ। ऑलवेज थिंक अबाउट योर फ्यूचर, ऑलवेज थिंक अबाउट इनिशियली अगर आप बड़े स्टेप्स नहीं ले सकते तो छोटे माइक्रो स्टेप्स लेके आप अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए जॉब की हंट में ना निकलें। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब फ्रॉम स्क्वायर 9 स्टार्ट, वी हैव क्रिएटेड 2 CEOs फ्रॉम माई ओन कंपनी, जिनके मैंने उनको प्रोजेक्ट्स भी ओपन करके दिए, जिनके मैंने उनको शेयर्स भी बना के दिए, जो कि मैं उनको साथ लेके चल रहा हूँ। दैट वॉज माई प्राउड मूवमेंट फॉर मी, क्योंकि दिस इज़ वॉट आई स्टार्टेड स्क्वायर 9। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपकमिंग 10 to 15 years में स्क्वायर 9 विल बी एवरीवेयर। एंड रेस्ट इकनॉमिक जो पोजीशन है अभी हमारी मुल्क की हालात जो जा रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा सा बता दूँ। बुरा वक्त आता है, हर मुल्क में आया, हर जगह पे आया, हर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ऑलवेज मेक अ प्लान बी। हम लोग हमेशा प्लान बी की तरफ जाते हैं, मुल्क की हालात जैसे भी हों। एंड सर ने अभी जैसे बोला कि हम न्यूज़ जब हुई तो उसके परमानेंट 500 एम्प्लॉयज़ सर ऐसे। एंड इफ़ यू सी द PTV के राउंड अबाउट 5000 प्लस एम्प्लॉयज़, एंड आई एम शॉक्ड ओवर हियर। आई वाज जस्ट लुकिंग ओवर देयर, मैंने स्ट्रेट अवे सर को देखा कि ये 5000 प्लस एम्प्लॉयज़, and one in a private sector and other one is on the government sector. We are here to support everyone. जो private organization है, हम builders हैं, हम लोग आपको support करने को तैयार हैं। 1.5 ट्रिलियन डॉलर से लेके 2 ट्रिलियन डॉलर्स तक की रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो ओवरऑल पाकिस्तान का है। रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड 200 प्लस इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें आपकी ग्लास की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, टिम्बर की इंडस्ट्री, आपकी केबल्स की इंडस्ट्री, यू नेम इट। हर इंडस्ट्री का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं आपका जाकर रियल एस्टेट से कनेक्ट हो रहा होता है। जब आपकी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री डाउन जाती है, सेम एज इट इज़ वो उसका इम्पैक्ट सारे बिजनेसेस पे आता है। तो आज ये वक्त मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो इंशाअल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम। हम सब मिल के ही इसका मुकाबला करेंगे और आगे इसको लेके जाएंगे। एंड इन द लास्ट आई वुड रिक्वेस्ट फैसल साहब, प्लीज़ एक रियल एस्टेट का कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट, कोई डिप्लोमा, कोई भी ऐसा आप
कुछ ऐसा प्लान करें जो कि आप अपने हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जितने भी लोग हैं, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे से बड़ा बिजनेस अर्न किया, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, नाउ दे आर द नॉट बिलियनर बट दे आर स्टिल मिलियनियर्स, और उन्होंने हमें ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया, ज्वाइन किया। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुरानी बातें, ये 2 साल पहले की बातें हैं जो कि मेरे ऑफिस के अंदर ये मिसालें हैं जिनको मैंने तैयार किया, और आज दे गॉट गुड कार, दे गॉट गुड हाउसेज, दे हैव सेट अप देयर स्टैंडर्ड्स। सो आई रिक्वेस्ट कि ये सब्जेक्ट जितने भी हैं इसके अंदर एक रियल एस्टेट को आप इसको एडअप करें, और हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जैसा कि मैंने बताया, आप सर्च करें कि 200 इंडस्ट्रीज़ इसके साथ इंटरलिंक है, कनेक्टेड हैं, और फिर हम उसमें हम ऑप्शंस देंगे अपने स्टूडेंट्स को कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। आइदर यू आर गोइंग टू डिप्लॉय अ स्टील मिल, आइदर यू आर गोइंग फॉर अ ग्लास इन फैक्ट्री, व्हाट्सोएवर, क्योंकि रियल एस्टेट के साथ हर बंदे की एक ज़रूरत जुड़ी है और वो हमेशा के लिए रहेगी। थैंक यू वेरी मच। Hello. I've taken your suggestion. Inshallah, some colleagues from the university are also sitting there. They'll pick it up. Mariam, Ibrar, pick up this suggestion and kindly talk to him. Real estate se Duret bhai, with your permission, ek baat yaad aayi. They say about real estate, whenever you want to buy, ये सुन लें, ये पीछे वाली young generation, those who want to be like him, सुन लो tip, मुफ्त दे रहा हूँ, पैसे नहीं charge कर रहा. Whenever you want to buy at the end of the city, because the city never ends. So pearls of wisdom from Faisal, and since I come from the same industry, I would like to also contribute towards what Waleed has said. I think Waleed is a role model for young entrepreneurs and young kids who are actually leaving their universities. एक बहुत important सवाल है जो I became a doctor, फिर मैं फौज में भी था, तो बहुत बड़ा when I was studying उस टाइम पे बहुत taboo होता था कि यार real estate industry में लड़का, यार ये property का काम करता है. So trust me, the world अभी तो आप खैर Netflix में you've started seeing hot-looking girls and smart boys doing the blings in California and Dubai, so you have better role models in front of you. But honestly speaking, the actual change that is needed, I've worked in 2 industries. I've worked in advertising, I've worked in real estate. So जब हम किसी corporate में काम कर रहे होते हैं तो आपकी growth का usual stride होती है कि जी I've gotten a salary of 50,000 or ₹1,00,000. My usual trajectory would be 15 years, I would get to a salary of 2.5, 3 lakh rupees, and I would get a good car from the company, and maybe a home allowance or something. This is a standard managerial position income for a decent sized company. But if you look at real estate, I don't know anybody who has worked in this industry for more than 2 to 3 years and he was capable and he did not have a car of his own, he did not have a house of his own. So जो young बच्चे हैं, actually आप लोगों को शायद अभी तक इस myth का नहीं पता कि if you guys come in this industry, you will bring about the change that a standard real estate individual is not bringing about, that is the strategic understanding and solution development. जो ये change है ना, ये अब this is going to be the new change. We need kids from these industries to universities to come in real estate and bring about a fast change and a committed behavior. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का वो क्या है? मिसकमिटमेंट. एवरीबडी सेज यार रियल एस्टेट में झूठ है, मिसकमिटमेंट है. व्हेन पीपल फ्रॉम families who are based on integrity come in the industry, they will bring about that change. Also, last week we've sat down, me and a few other strategic developers, जिनका बहुत credible इदारे हैं, हमने बैठ के एक plan propose किया है government को. वो plan ये है कि जैसे मैंने सारे दोस्तों से पूछा कि यार what is the immediate solution to this crisis? So immediate solution to this crisis is that we are actually setting up a group of credible developers. We are engaging defense housing authorities also. They might not be representing themselves, but they might send their representatives across the globe. So bringing about government as a partner, we want to run this campaign called Invest in Pakistan, Save Pakistan.
सो इन्वेस्ट इन पाकिस्तान सेव पाकिस्तान की का कॉन्सेप्ट ये है कि हम 15 से 20 डेवलपर्स विल विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट विल गो टू एटलीस्ट 15 to 20 countries and we will talk to overseas Pakistanis. फैसल वेरी राइटफुली सेड, हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए. इतना उसे अपनी औलाद से प्यार नहीं होता जितना उसे पाकिस्तान पीछे बैठे हुए लोगों से प्यार होता है, रिश्तेदारों से प्यार होता है. चाहे वो जितनी प्रॉपर्टी डेवलप कर ले, उसे पाकिस्तान में आने का दिल में ख्वाहिश होती है. मैं अभी कतर रुका 2 हफ्ते पहले एंड यूड बी सरप्राइज कि वहाँ मुझे लोगों ने डिनर दिया हुआ था. दे वर क्राइंग. लोग मतलब यहाँ इतना मैंने परेशानी नहीं देखी जितनी मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को परेशानी देखी. एंड व्हेन आई प्रपोज टू देम कि अगर हम इस तरह कुछ करें, उन्होंने कहा जी वी विल ऑल कंट्रीब्यूट. सो वी आर रनिंग दिस कैंपेन वेयर बाय वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग अबाउट डॉलर. हम डॉलर पाकिस्तान लाना चाहते हैं. वी विल सेल द प्रॉपर्टी इन डॉलर्स. That dollar can come to Pakistan, government can keep that dollar and in return give us the rupee with which we will do the development, which should be based on escrow. So this is what we are initiating. Inshallah, we are very hopeful we will actually have a successful initiative this time. Thank you so much. And I have a question here. One last question. Well, thank you very much. My name is Sohail Kiani. I'm an overseas Pakistani. After 30 years, I returned. I've lived in 5 countries as an investment banker. I've been here now 12 years. मैं उर्दू में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ या कोई नसीहत या कुछ एडवाइस. वो ये है कि आपने सबकी बातें सुनी और ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको कहते हैं कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री. ये एग्जैक्ट वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में. वलीद एजुकेशनिस्ट, ऑयल एंड गैस, ओगरा, बैंकर, माइक्रो फाइनेंस, डिज़ास्टर रिलीफ विच इज़ अ बिट ऑफ द सेंटर, और हम टीवी जो है मीडिया, और उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपमेंट. ये बहुत पावरफुल ग्रुप है. आई होप कि आप लोगों ने इनको गौर से सुना. मैं इनसे 2-4 सवाल भी पूछूंगा आपकी इजाज़त से. वो ये है कि पहली तो बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए. मैं आपको बताता हूँ. इस वक्त जो $300 बिलियन का बजट है पाकिस्तान में, GNP गिव और टेक, आपको मालूम है कि $2.5 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हैं इस मुल्क में. उसको ज़रब दें आप 12 से, कितना आता है? 30 बिलियन. वो आता है लीगली, उसका डबल इलीगली आता है. 30 और 60 को मिलाएं तो कितना हुआ? 90 हुआ. $90 बिलियन, और आपने $5 बिलियन यहाँ से भीख मांग लिए, और 3 बिलियन क्या नाम है अबू धाबी के शेख से उसको क्या नाम है मना लिया, और चाइना से भीख मांग ली. 110-120 बिलियन पे ये मुल्क चल रहा है. ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैव अ वेरी बिग पार्ट टू प्ले इन दिस कंट्री. लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी they are not given the credit which they're due. उनको तो वोट भी नहीं मिलती थी कुछ साल पहले. शुक्र है खुदा का कि अब उनको वोट दे दिए. अच्छा, एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि ये जो सारा सरमाया है मेंटल, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं. जो आते हैं यहाँ पर वो लुट जाते हैं. ठीक है, लुट. मैं आपको बड़ी बड़ी कहानियाँ बता सकता हूँ. तो ये मीठी मीठी बातें ठीक हैं, लेकिन असल बात करो. अब इन्होंने जो कहा है कि $US पाकिस्तानी लाएंगे, कितने पैसे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास? आपको पता है कितने हैं? मैं आपको बताता हूँ. ये बहुत, मैं मेरिल लिंच इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है न्यूयॉर्क में और सिंगापुर में. हमने जो स्टडी की कि सबसे अमीर कौम जो है जिसके पास दौलत है, कोई बता सकता है कि किस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा दौलत है? प्राइवेट दौलत, हुकूमत के पास नहीं. Not Russians. The most money is owned. Actually, money does not matter. Assets matter. कैश की वैल्यू नहीं है. कैश ऊपर नीचे जाता है. असल चीज़ होती है एसेट्स. किसकी शुगर मिल है, किसकी क्या नाम है गेहूं है, किसकी शिप्स हैं. सबसे ज़्यादा है ओवरसीज़ चाइनीज़, $400 ट्रिलियन. सेकेंड है गल्फ अरब्स, गिव और टेक, उनकी है $150 ट्रिलियन. थर्ड है
डच ईस्ट इंडिया कंपनी 500 साल से खेल खेल रहे हैं दुनिया के साथ, और यहाँ छुपाया वहाँ छुपाया। फोर्थ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आई डोंट हैव टू टेल यू। फिफ्थ है नॉन रेजिडेंट इंडियंस 400। आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के पास एसेट्स कितने हैं? आपको हैरत होगी। ये हमने $2.5 मिलियन दिए थे स्टडी करने के लिए फ्रॉम मर्क्यूरी एसेट मैनेजमेंट ऑफ ग्लासगो, जिन्होंने स्टोकेस्टिकली बहुत ज़बरदस्त स्टडी की। दे फाउंड आउट दैट ओवरसीज पाकिस्तानीज कंट्रोल $700 बिलियन टुडे। अच्छा, नहीं, मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ ना, पीछे सवाल भी करने लगा हूँ। आप मुझे 1 मिनट दें। अच्छा, अब बात यह है कि चलें भाई, आप सेरेमनीज करें, मैं तो ज़रूरी सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ एक ऑयल एंड गैस एजुकेशन तो है ही है, लेकिन ऑयल एंड गैस से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस मुल्क में नहीं है। जो आपका सरमाया निकलता है, पाकिस्तान इज़ अ गैस प्रोन कंट्री, नॉट ऑयल प्रोन। जो करक से ऑयल निकलता है वो कम है, गैस ज़्यादा निकलती है। स्वी गैस डिप्लीट हो गई है। तो आपने कहा ना कि आप मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में है, जो अप स्ट्रीम में है डीजी, तो आप मुझे ये बताएं आपकी पॉलिसीज इतनी माठी क्यों हैं? आप क्यों नहीं और लोगों को आने देते ताकि वो ड्रिल करें? आई मीन वाई यू डोंट। एक चीज़ है सिंपल, मैं तो थक गया ओजीडीसी के चेयरमैन को कह कह के कि क्या नाम है, जब अब्दुल्ला यूसुफ थे और ये लोग सब आए थे बाद में, कि आप जो हैं जो पैसा है लोगों का वो ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग में लगाएं तो उस पर टैक्स बेनिफिट मिले। कोई करता ही नहीं है। उनको चाहिए बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको प्लॉट्स चाहिए, ये चाहिए। तो ये जब नहीं हुआ 20 साल पहले, जब सिंगापुर में मैंने कहा था अब्दुल्ला यूसुफ से, तो उसका नतीजा अब ये है, द टाइम इज़ ओवर, यू डोंट हैव एनी मोर टाइम। ये जो आवाम है आपकी, क्या नाम है, 24 करोड़ की अब 30 करोड़ की हो जाएगी, ये सब इनको क्या नाम है एनर्जी चाहिए, और अगर एनर्जी नहीं आपकी होगी तो आप मर गए। तो आप प्लीज़ फॉर गॉड सेक्स अपनी पॉलिसीज़ को कॉन्सेंट्रेट करें। एंड वो जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। द टाइम इज नाउ। नहीं, बहुत अच्छा इनका सवाल है और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, और जाहिर है ये बड़े पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने अच्छे जज्बात का इज़हार किया है। लेकिन जैसे कि मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री होती है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक अप स्ट्रीम, एक मिड स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। ओगरा जो है वो मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को रेगुलेट करती है। जो हमारे अजीज़ दोस्त ने बात की उसका ताल्लुक अप स्ट्रीम से है, उसके रेगुलेटर जो हैं वो डीजीपीसी हैं, लेकिन जो इन्होंने बात की है मैं उन तक इनका पैगाम लाजमी पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, it's time to move towards the speaker's souvenir ceremony, and for that I would like to invite the CEO of AirLink Communication Limited, Mr. Muzaffar Hayat Raja, to please come on the stage and present the souvenirs. I would also like to request the founder and president of CEO Club, Mr. Ijaz Nisar, President CEO Club Pakistan Karachi Chapter, Mr. Shabi Ikram, to please present the speaker's souvenirs. Can you please have these souvenirs on the stage, please? Yeah. So we'll move towards the ceremony, and for that I would like, I'm doing it. Ghazan for Izam. So Muzaffar, Ijaz Nisar and Shabi will be presenting the souvenir to Ghazan for Izam, CEO Jazz Microfinance Bank. So let's clap for him. He's the guy who always speaks about the positivity. And next to him is one and only the hero of Islamabad, Faisal Mushtaq. Yo! And following after Faisal, I'll be calling the supporter of CEO Club Pakistan and the guy who told his story, Waleed Malik, CEO Square 9. So the Waleed is here, so please present the souvenir to him.
Waleed, you are one of our youngest CEO in the book 2023. After Waleed, we will be presenting the souvenir to Mr. Bilal, CEO NDRMF. Thank you, Bilal Saab, for coming over and for supporting CEO Club Pakistan and CEO Summit Asia Islamabad. And then Durait Qureshi, please Durait, come on board. We want to give the souvenir to you. And we are missing Sultana Apa this time. Okay, just a second, I think so Bilal Saab souvenir, they are handing over. Okay, wait. Please stand up in a line. Ijaz Saab, stand in a line. Yes. Okay, nahi hua. No, Chairman Ogra, I'll be calling in the end. I love the way he answered the question. Yes, Mr. Bilal, who's the CEO for NDRMF, making Pakistan resilient. A big clap for NDRMF. Thank you, Bilal sir, for supporting this CEO Summit Asia. And next is Chairman Ogra. Please, the way you tackled the question, love you for that. So please, a big round of applause for Chairman Ogra too. Thank you so much. Ijaz Saab, kindly stand in a line. Yes, thank you so much. And then, is Durait done? And here is to our young moderator who moderated the show so well, Dr. Kamran Fazal, who is a doctor, captain, and now a real estate entrepreneur. And for him, I always say he's building a paradise in Bahawalpur. So all of you are requested to visit the Kmeel Square. Okay, group photo of all the speakers, and then we will be doing the book launch, or the book distribution. So group photo, and then I'll be requesting Chairman Ogra to stay on stage and Durait to stay on stage. Group photo, please. I know you guys are hell tired. So group photo, smile. Thank you, all of you. Yes. ये बड़े खूबसूरत लोग खड़े हैं, ये बहुत बड़ा पैनल था, ये आज का क्लोजिंग था। मैं इनके साथ चाहूँगा कि जो आज के जो वॉलंटियर्स है वो इनके साथ नीचे खड़े हो जाएं, इनके नीचे, अभी नहीं, इसके बाद भी चले जाएंगे सारे वॉलंटियर्स। आप ज़रा जो आज के वॉलंटियर्स हैं इनके नीचे खड़े हो जाएं जी। ये इन बच्चों के लिए एक क्लैप करनी है जिन्होंने इस प्रोग्राम को, आप नीचे आके खड़े हो जाए बच्चे सारे। हमारी टीम जो सीओ क्लब की शफक आप भी आए, बिल्कुल देखो इधर से आपको ना सारे ले जाए। Okay, all the volunteers, thank you for making this happen. सर आप बच्चे, ये बच्चों की ये स्पेशल ये रूट्स के हैं, ये फैसल मुश्ताक साहब की टीम समझ लें। ये बच्चों आपके लिए हमने स्पेशल एक ये आपके लिए एक इंस्पिरेशनल सेशन रखा है, ये फैसल आपके बच्चों के लिए है। आपने जाना नहीं हर टेबल के ऊपर से, अब सारे बच्चे आगे आ जाए, ठीक हो गया? ओके। ये इनके लिए, इन बच्चों के लिए जो सुबह से खड़े हैं, जो सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम के अंदर ये रूट्स को और फैसल को और इनके बच्चों के लिए ये स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज मेरी तरफ से, सीओ क्लब की तरफ से, प्लीज। थैंक यू वेरी मच बच्चे, आपका बहुत शुक्रिया। सर आप इधर ही रहेंगे, जो ऊपर वाले लोग हैं। अब कुछ लोगों को कुछ किताबें देनी है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि बच्चों को मैं पहले एक्नॉलेज कर लूँ, क्योंकि बच्चों को एक्नॉलेजमेंट मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब ओवर टू नाज़िया। So thank you so much. I want Chairman Ogra and I want Durait to stay on stage with us and Waleed Malik on. Yes,
the rest of go down and then I'll be calling people. Thank you so much. You can exchange card off from the stage. Okay. Shabi, excuse me, Shabi, we need to do the book ceremony. So can you please request Muzaffar, Waleed, Duraid and Chairman Ogra will be on stage. And Bilal Saab as well. Hanji. Shabi, kindly let people ask to move on so that I can do the distribution. Okay, I'll be starting with Paragon, Karachi. Please come on stage. Babar, are you around? So my first book is for Babar, who is the CEO for Paragon Construction, Karachi. Ijasab, you will see that who will be presenting the book. He is the head for YPO Karachi as well. Duraid will be presenting or who will be presenting? Okay. Big round of applause. Now I'll be requesting Numan Said from Lenovo to come on stage and take the book. Lenovo, Numan Said. SI Global, Numan Said. And afterwards, Hasnain Asher from Norway. Okay, yes, I know Safdar Saab is right in front of my eyes. Safdar Saab, come up, please. Sahar, please come up for the book collection. One by one. Hasnain, sir. Lenovo, SI Global, Numan Said. And then we are having Sardar Rashid Khan. Where is Sardar Rashid Khan? I'm looking forward for Sardar Saab to come on stage and take the book. Saqib, Mansoor A. Sheikh. Who else is around? I can't see people. Is Sahar here? Ijasab Sahar. Ijasab udhar se sir nahi. Oh, okay. Baloch, please come on. Shahid from Lahore, carpet, Shahid Saab. Yes, let her take the book and then we'll do the clap in the end. Ijasab Sardar Saab is standing there. After Sara, Sardar Rashid Khan will be taking the book. Oh, now Duraid is presenting the book to Sara. No. Definitely, Sara, you are going to Hum TV now. I can assure you that. And then Sardar Rashid Khan from Centaurus Mall, the name in Islamabad. Yes. Yeah. Okay, now, whom I can't see. Okay. Now I would like to call. Numan is down. Okay. Now Shafaq, Saqib, please come over. Asghar Haris, Anam, Shifa.